So we can start our session. So this is what is contractors all risk policy we are going to discuss, and this is part one. So we will look at the initial things. Okay, policy coverage, your exclusions. Some of the exclusions are very important, which I'll be telling. Then your general rules and regulations. What are the provisions for refund in policy? How installment premium is to be calculated? So all these things, sum insured calculation, how it is to be done, how under insurance is to be calculated. So this is what all things I am going to explain, and some of the add-on covers also will be taken in this session. Add-on covers, few add-on covers. Okay. Now, let us start with what kind of projects they can be covered under contractors all risk policy. So this is basically designed to insure projects involving construction of civil works and structures, basically, not for engineering. For civil works, CR policy, engineering, ER policy. So these are the various examples. You can see road, bridges, canal, irrigation projects, tunnel, dams, reservoirs, hydro, installation of they also go because it involves a lot of civil works, including construction of dam. So normally we give your CAR policy, and your engineering components, they are covered under your ER policy. So it is a mix of CR and ER. So these kind of projects we cover under contractors all risk policy. And let us see some of the photographs for those who are not very much conversant with this policy. Okay, so these type of high-rise building, CR policy to be given. This is your construction of flyover. Okay, so for this also CR policy will be given. Construction of flyover, bridges, roads, all these things. This is again office building into construction, high-rise building, multiple floors are there. So this is again CR policy, including your foundations, basements, everything will be covered under CR. This is laying of pipeline. Okay. Digging of trench, then laying of pipeline. This also fall under this category. This is again laying of pipeline, water pipeline. This is projects involving works in water, jetty. So construction of jetty, breakwater. So all these things, they are also covered under this particular policy, CR policy. Construction of river bridge, road construction, etc. Okay, so these are the special various kind of civil engineering projects which can be covered under CR policy. Now let us see what are the salient features. So normally this policy is given where civil works is more than 50% of total project value. As you know, normally projects 100% is not there. It is a mix of mechanical and civil. So we go by this thumb rule. If civil work is more, we give CR policy. If engineering works are more, then we give ER policy. Like your construction of thermal power plant, if you see, it is basically ER is given, but a lot of civil work is also involved. Constructions of godowns, your sheds, your various blocks, civil construction, that is also involved. So it is a basically mix of these two kind of activities. But just because engineering portion is high, we give ER policy, and wherever you see whatever projects we have seen, wherever we find CR component is more, the civil work is more, then we give CR policy. So it is all risk subject to certain exclusions. What we cover in this policy, it covers physical loss or damage to the project works whilst they are stored, storage at site, construction site, they are stored. Because before starting of construction activity, there is some period when the machines and other project material, they are stored at construction site. So our period starts from this arrival of first consignment at site. Then during the construction stage, it is covered. Then during the defect liability period, I'll explain all these things. If it is opted by the contractor, invariably it is taken, and many times we have seen
the construction is 3 years, and defect liability is 5 years, 7 years. So it is, but the restriction is total construction period plus defect liability period should not exceed 84 months. So that is the upper limit. So we manage accordingly, 7 years. So if 2 years is the construction period, maximum defect liability period which can be given is 5 years. Okay. So this is a diagram. Yesterday only I prepared. I had for engineering, but for CAR policy I did not have. So till now I was using the same diagram because it was carrying testing period also. So I thought, let me prepare a new diagram exclusively for CAR insurance. Now in this, you can see various stages. As I told, initially, the first stage is your storage of construction material and other equipments if they are used. Then comes your construction period, actual construction. And slowly you can see gradually the construction keeps on increasing from 0 to 100% it reaches. And this is the end of construction period. Okay, so this much is a storage. It can be 2 months, 3 months, 4 months, whatever it is. Then your construction period. Sometimes there is no storage. Right from day one, you start the construction activity, but normally it is there. Some period is there. Then once the 100% project is completed, there is no testing involved in CR policies, as you all know. So at this stage, this is the stage of provisional handing over of the project. The contractor says the project is completed and it is given to the principal. It is known as provisional handing over at this stage. Then the contractor's liability is restricted only to the limited portion which is related to maintenance activity. That's all. After then, your contractor is free from all risk, all perils coverage. Till now, it was a contractor's liability was 100%. But from here onwards, your operational perils will be covered by principal, not by contractor. And I'll explain. In some cases, your contractor, he himself is involved for that. Just a minute. Now, there are two kinds of projects. In one case, the contractor is relieved the moment the project is completed and it is provisional handing over is done. After then, your maintenance period starts. It can be 1 year, 2 year, maximum 2 years. It goes up to that maintenance period. In engineering, it goes up to maximum 24 months. But in civil projects, it can go up to your 6 years also. If 1 year is the construction period, it can go up to 6 years maintenance period. Okay. And during this period, I'll explain subsequently in detail. The contractor's responsibility is only in respect of your loss or damage to the contract works relating to maintenance activity. So any loss which has taken place while carrying out the maintenance activity by the contractor, only those losses would be paid during this period. I'll explain this in detail. Okay. But in another type of projects, first let me finish this. And in this situation, case 1 we are talking, in this case, the operational covers shall have to be taken by the insured, by the principal. Okay. Principal has to take operational cover like fire, IR, or your individual policies can also be taken, because any loss arising out of operational risk will be out of the scope of this policy. Okay. Now, there are two types of, I told you, there are two types of projects. The other type is the contractor after completion, he is given, we call it your build, operate, build, own, operate, and transfer. Okay. Boot, build, own, operate, and transfer. पहले build करो उसे, like road contract.
road construction work. It is all on boot, B-O-O-T. So first of all, contractor, as per their contract, long-term contract it is. So as per the contract with NHAI, mostly the projects are coming where NHAI is making road construction work in a big way in India. So all highways, they are being constructed. So in that case, the construction period is 2 years, 3 years. After then, the NHAI says to the contractor, now you operate this road, collect the toll, maintain it, own, maintain, and after 20 years or 15 years, you hand it over back to me. Okay. Then the principal will take over the project. During this period, this policy continues. Okay. And in that situation, the handing over is not done. So entire operational risk will continue during maintenance period also in this situation. Okay. We will talk in detail subsequently in our presentation. And once the maintenance period or this concession period, this toll period, during which the contractor is supposed to collect the toll revenue, after then the final handing over is done. Okay. So these are the various stages. So this total period is policy period. I'll explain period of cover. Then now let us see the policy coverage. What it covers: location risk. Okay, fire, lightning, theft, burglary. As we all know, this is an all risk cover subject to certain specific exclusions. So it is an all risk policy. What we various kind of perils we can see: it is fire, lightning, theft, burglary, handling risk, impact damage, collision, failure of cranes, collapse. All these things during the construction stage, they are covered. Loss due to these perils, they are covered. We call it handling risk. Then human element: carelessness, negligence, malicious act, right strike, human error. All these things are covered with certain exclusions. I'll explain in subsequent slides. So careless and negligence, it is covered, but willful act and willful negligence is not covered. I have given certain examples also, okay, for this. There are certain major perils, act of God events. Let us see, they are defined because separate policy access is defined in the tariff. So for normal claims, one set of access. For major peril and act of God event, different set of peril is there. Different set of access is there. So these are defined: earthquake, STFI, rock slide, landslide, lightning, other atmospheric disturbances, collapse. This is very important. Collapse is also covered under CR policy. If the structure collapses during construction, they are making a wall, it collapses, it is covered. Subject to various conditions, of course, we will see. Okay, but it is covered. Fire policy does not cover. Then your water damage, we call it wet risk. It is also coming under the category of major perils, act of God. It is major peril. Then contracts involving works in water, they are known as wet risk. The policy access is comparatively higher for this set of works. Okay, so what is wet works? Contracts involving works in rivers, canals, lakes, or sea. So jetty construction, which is in sea, it falls under the category of wet risk. Okay. Now come to sum insured part. What should be the sum insured? The policy says the sum insured, it should represent the total completed value of the project. Comprising of what? Comprising of following cost other than pre-operative expenses. Pre-operative expenses, I'll define what are those expenses. They are not supposed to be added to the policy sum insured. Okay. Wow, what are those expenses which are incurred by the insured prior to commencement of project? Initial things. I'll explain this also. Now let us see the breakup. The sum insured of the policy should comprise of these things. So first is your landed cost of indigenous material, inclusive of freight, taxes, and duty. Once we say landed cost, it means
Cost of material inclusive of all these things. This is landed cost. Same is landed cost of imported material, inclusive of freight and duties, taxes, and all that. If it is there, not in all cases imported material is there. In engineering, it is invariably it is there, but in civil, normally it is not there. This component is not there. Then third is very important. Cost of free issue material by the principal. Many times, certain things, okay, certain project materials, they are given by the principal free of cost to the contractor. Now, contractor, many times it happens, since it is coming free of cost, he is not paying for this. So that is why they forget to insure under the policy. And if there is a loss to freely issued material by the principal, it remains uncovered. So we should invariably, without fail, we should add this cost of freely issued material by the principal. Okay. And the sum insured has to be shown separately against this item, these items. Then fourth is again very important, cost of construction, which includes your wages, power supply, and other utility cost of. Sir, few examples. Okay. I'll give during that time examples for what you are asking. Unmute karo inko jara. Acha, okay. We will take your query after this slide. Just wait. Just wait. आप लोग हैंड रेज करिए, मैसेज मत लिखिए. Okay. I get confused with that. The cost of construction, including wages, power, and other utilities, if he's utilizing some other utilities like gas, okay, electricity is already coming, then water supply, if he's paying for that, for the project construction work, that has to be added. Okay. Then your cost of permanent civil engineering works. This has to be declared. Cost of temporary construction. Many times this is left out. F component is left out in the while calculating the total value of the project. So it is very important. Although they will be demolished at a later date, but they have to be a part of your project sum insured. Okay. So why? Because in case there is any damage to these temporary constructed items like labor quarters, temporary sheds, offices, godowns, and temporary access roads, etc. Okay. Before completion, if there is a loss, of course, this will be covered under CAR policy. And then nowadays, this component has lost its importance, but in TSE days, it was very much there. Whatever escalation is opted for, 50% of that was taken for premium computation. Okay. So the 50% of escalation cost was supposed to be added, but as on date, this is in free market, it is given free of cost. So this component can be ignored, but you should know the provision, erstwhile tariff provision. Okay. And these are the pre-operative expenses. They are not supposed to be included in policy sum insured, like technical consultant fee, project financing expenses, soil testing, compacting and leveling expenses. These expenses should not be insured. Of course, they are incurred. Okay. And they are the part of project sum insured, but project survey report, project report, which is submitted to the bankers, but for insurance purpose, they are not supposed to be added. Now, let us see what she was telling. Yes, please unmute. Gaurav, inka query jara le lo. Sir, just Himani. Yes, Himani. Just एक मिनट सर, अनम्यूट कर रहा हूँ. Mic is not working. Vijay, just wait. Wait for some time. Pehle. I have asked for unmute. उनको unmute कर दिया ना? Yes, Himani, please ask. हिमांशी. या फिर इनको बोलो चैट बॉक्स में लिख देना.
share few examples for free issue material. Free issue material में suppose your principal is the dealer of cement. He himself is a supplier. He is the stockist. So in his project, he can tell to the contractor, forget about purchasing of your cement. I'll supply free of cost. This is one example. In civil engineering. In your engineering projects, there are many other things, like many things can be provided by the principal. But in civil engineering, okay, or he may say that whatever your iron, your rods which will be used, सरिया जिसे बोलते हैं in Hindi, which are used in construction for reinforcement purpose for RCC construction, inside that material, the iron, the metallic rods which are used, they can be supplied. So it will be a free of cost item. Okay. Now, what about you, Vijay? Got it, sir. Thank you. Hi sir, good morning. आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलो। अच्छा सर, मेरा जो वो है कंसर्न है, वो है मेंटेनेंस पीरियड को लेकर। जैसे एक बिल्डर ने पूरा किसको लेके? फ्री मटेरियल, मेंटेनेंस पीरियड सर। मेंटेनेंस कवर के बारे में है सर। मैं ऑडिबल हूँ क्या? ऑडिबल हो? हाँ बोलो फिर। हाँ, यस, टेल मी। मैं ऑडिबल हूँ क्या सर? यस, यू आर ऑडिबल। सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो मेंटेनेंस पीरियड को लेकर है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि बिल्डर का अपना जो काम पूरा हो जाता है, उसके बाद बिल्डिंग गेट कंस्ट्रक्टेड एंड गिवन ऑपरेशनल थिंग्स। वंस इट इज ऑपरेशनल, तो जैसे रेजिडेंट अगर वहां पे आकर रह रहे हैं तो दे टेक अ बीजीआर पॉलिसी एंड अ बिल्डर आल्सो हैज अ सीआर पॉलिसी। तो डज इट क्लैशेस, लाइक, क्योंकि एक तो बीजीआर पॉलिसी चल रही है बिकॉज वहां पे द बिल्डिंग इज ऑपरेशनल and a CR has been taken by the principal or the builder. So how it impact, like sir? अच्छा, वो मैं बताता हूँ। इसमें क्लैश नहीं करेगा बिकॉज CR पॉलिसी चल रही है, बट द स्कोप ऑफ CR पॉलिसी इज लिमिटेड। ओके, वो लिमिटेड क्या है? ऑपरेशनल रिस्क, एज आई टोल्ड, कि अब मान लो फ्लड हो गया। हाँ जी सर। सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा है, बिल्डिंग तैयार है, वो दैट विल बी पेड अंडर BGR पॉलिसी। वो तुम्हारा CR पॉलिसी पे नहीं करेगा, because during maintenance period the scope is restricted only relating to maintenance activity work. अब बिल्डर को वहां पर कुछ मान लो कुछ उसमें मेंटेनेंस वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल का कुछ काम करना है, देयर इज सम शॉर्ट सर्किटिंग इनसाइड द बिल्डिंग। नाउ इलेक्ट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्टर है, ही विल बी कॉल्ड, भाई देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सारे घरों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो टू पॉलिसीज कैन बी साइमल्टेनियसली रन, लाइक एक बिल्डर का पॉलिसी अलग रन कर सकता है और जो हाँ, ऑफ कोर्स the principal policy is different, contractor's policy is different. CR policy is taken by the contractor and principal has taken BGR policy or IR policy or whatever you can take. Perfectly fine, sir. Got it, sir. Thank you. Very good. Now let us see Vikas, आपका भी देख लें भाई। Tell me. Sir, can you hear us? Can you hear me? I can hear. Tell me. Sir, there are two things. One, say for example, there are government tender projects, और टेंडर में जो कॉस्ट आती है उसमें पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं विष्णु सर। हाँ। तो लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम, क्लेम असेसमेंट, दोस टैक्सेस आर नॉट पेड। सो हम आपने इसमें लिखा है लैंडेड कॉस्ट एंड फ्री मटेरियल, उनमें हमको टैक्सेस ऐड करने हैं। तो हमारे को सिर्फ एग्जांपल 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है एंड देयर इज अ 18 करोड़ ऑफ टैक्सेस। So should we take under CR 118 crores of the total value at the time of calculation for taking the policy, or 100 crores? भाई उसमें तो टैक्सेस के साथ ही लेना है ना, इंक्लूडिंग टैक्सेस। इसमें क्या है, जैसे आपके जो लोकल टैक्सेस हैं, अब इंपोर्टेड मशीनरी में कस्टम ड्यूटीज वगैरह आ जाएंगे, ओके, वो भी लेना है। और ये लोकल टैक्सेस जो हैं, अब GST, यू आर टॉकिंग ऑफ GST ना? यस सर। हाँ, तो ये सब लेना है। और वो अगर जो है, इफ द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर वो पे कर रहा है, इफ ही प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ GST, इट विल बी वेरी मच पेड अनलेस ही गेट्स अ सेट ऑफ। आजकल वो GST इनपुट क्रेडिट मिल जाता है ना। यस सर। तो उसकी वजह से सर्वेयर्स जो है उसको डिलीट कर देते हैं, डिसाइड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है, यू शुड नॉट गेट डबल बेनिफिट। अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिल गया अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, then surveyor will not consider that. Okay.
Perfect. Sir, one more quick question is that you were saying that the maximum term of the policy in this policy can be taken 84 months. But while you were talking about the road projects, you were saying that the policy will continue with the contractor for 20 years also. हाँ हाँ How is it possible, sir? हाँ, वो पॉसिबल कैसे है? उसमें 20 इयर्स तक उसका कॉन्ट्रैक्टर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारी जो सीएआर पॉलिसी होगा उसको हम चलाएंगे जो मेंटेनेंस पीरियड है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसमें क्या होगा, अलग से जो ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ जिस टाइम वो टोल कलेक्शन कर रहा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ही विल टेक ऑपरेशनल पॉलिसी. CR policy will not continue for 20 years or 22 years. Okay. CR policy का maintenance जो period होगा, that cannot exceed 7 years. 7 मतलब 84 months. Construction plus maintenance. लेकिन उसको जो है वो चलाना है तो right from day one operational cover ले लेगा contractor and we can give. देखो एक concept क्या होता है, operational cover cannot be given to contractors. But in such cases जहां पे boot BOOT वाला rule लग रहा है, उस केस में contractor himself becomes a owner. He himself becomes a owner for 20 years or 15 years as per the contract with an HAI or any other principal. तो उस केस में उसको ऑपरेशनल पॉलिसी दे दी जाती है and that operational policy will continue. वो हर साल उसको रिन्यू कराता जाएगा. सर ये ऑपरेशनल पॉलिसी इज अ नॉर्मल फायर पॉलिसी प्रोजेक्ट्स के लिए या? हाँ हाँ, फायर पॉलिसी है और क्या, रोड को फायर पॉलिसी दे देंगे. It will take care of all. और मेंटेनेंस का जो है वो केवल सीआर में कवर होगा, मेंटेनेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं. ओके ओके, थैंक यू सर. यस, लास्ट जस्ट वन थिंग, विकास जी ने जो पूछा था कि जीएसटी वगैरह रहता है एंड यू सेड के सेट ऑफ मिलता है, इसके लिए सर्वेयर उतना अमाउंट पे नहीं करते हैं. एडिंग ऑन टू दैट 18% पे इनपुट आ रहा है जीएसटी का, मेरे को सेट ऑफ सिर्फ 5% के बेसिस पे मिलना है एज पर द बिल्डर ये प्री कंस्ट्रक्शन रूल्स. तो डिफरेंस ऑफ 13% इन टैक्स विल बी पेड टू मी एट द टाइम ऑफ क्लेम. वो सर्वेयर वो डेफिनेटली कंसीडर करेगा. सर्वेयर आपने अगर फुल सम इंश्योर्ड में ऐड किया हुआ है, इफ यू हैव पेड प्रीमियम फॉर द फुल अमाउंट, आपने पूरे 18% पूरा पे किया या 15%, व्हाटएवर इज द एप्लीकेबल जीएसटी टैक्स, उसमें जितना आपको रिकवर हो गया वो माइनस करके रिमेनिंग कॉस्ट हैज टू बी पेड. टैक्स जो है सर्वेयर को देना चाहिए. डन सर. देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड डिडक्ट. वो बस ये देखेगा डबल पेमेंट ना होना चाहिए. दैट इज करेक्ट सर. थैंक यू सर. Okay, thanks for raising these queries. Let us continue, otherwise we won't be these questions we can take afterwards also. Now policy coverage में आइए. What it says, section 1, it has got two sections. Section 1 relates to material damage and section 2 relates to third party. So let us see first of all what section 1 covers. So this policy agrees that if any time during the period of insurance, any part of the project is lost, damaged or destroyed by any cause other than those specifically excluded hereunder, it is all risk policy. In that case, अरे यार अभी रुक जाओ, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में. ओके चेतन, जस्ट वेट. सो अभी प्लीज डोंट राइट मैसेजेस इन बिटवीन, अदरवाइज एवरीबॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड इन दैट केस. रिक्वेस्ट ऑल. सो इफ इट रिक्वेस्ट it is damaged by a cause which is excluded under the policy other than that cause, then the such case necessary negotiating replacement repairs, the company will pay or make good all such loss or damage subject to maximum or sum insured. So what it says, during the period of insurance, this word is very important. If the part of the project is lost, damaged or destroyed by a peril which is not excluded, and it requires negotiating, it requires replacement or repairs, then the company will pay or make good such loss subject to maximum of policy sum insured. इससे ज्यादा नहीं देंगे. So this is what is section 1, and what section 2 says, it is third party liability. It has got two components. One is TP, property damage. It covers legal liability for damage to property of others, including property held in trust.
Okay. So this is third party property damage. This component is very important. Now, for example, if at the project site, you visit or surveyors, they go, okay, and their property is lying nearby. This is a third party property for the contractor. Okay, and some machineries, contractors machinery, because registered vehicle will not be paid under CAR policies. So I was just thinking to give example, then immediately I changed my mind. Reason being, if the vehicles are registered, and then in that case there will be a dispute. So third party property or property held in trust, like other contractor or principal or contractors, some other person. Just a minute, 1 minute hold karna. Hello. हाँ. Mute. Yes, I would like to unmute. हाँ. So third party liability, one is property damage. I was giving example. If any property belonging to others, not related to contract works at the construction site, if that gets damaged, then your contractor is responsible and policy will respond to that. Okay. And I was giving some example. If nearby flats are broken during the construction stage, many times the construction takes place in congested areas, within the city premises, within the colonies, the construction takes place. And in that case, because of movement of that tower crane for shifting of material from one place to another, if it damages the nearby third party flat, then it gets covered under this section, TPPD. And similarly, third party bodily injury. So here, any visitor to the construction site, if he gets injured or fatal or non-fatal injuries, so that kind of payments are paid under CAR policy by the insurance company. Okay. We will take queries later on. Let us continue. Then let us see the general exclusions. Okay. Now, what are general exclusions? This policy shall not indemnify the insured in respect of loss, damage, or liability arising out of or aggravated by. These are the general exclusions. Specific exclusions we will tell later on, like any loss or damage by war, invasion, act of foreign enemy. These are excluded in all type of policies. Okay. Then nuclear reaction, nuclear radiation, radioactive contamination, not covered. Willful or act or willful negligence. This is very important. As I was telling, your negligence is covered, but your willful act or willful negligence of the insured or his representative or by his responsible representative. So if this kind of loss has taken place, where it is established, I have given few examples on subsequent slide. What are those willful act or willful negligence? You can understand better. Another important exclusion is cessation of work, whether total of or partial. This is also very important exclusion. If the work is stopped, either partially or totally, your policy does not respond. I'll give clarification for this also. During Corona period, there was a lot of hue and cry because of that government restrictions. Okay, so it was restricted. Workers cannot move to the construction site, and the projects there was cessation of work. So that time, there was a lot of hue and cry, and policies were extended by way of giving specific extension. Okay. So here also I'll give few examples. Now, examples of willful act and willful
negligence. Okay. Let us see the first example. In this case, ignoring safety protocols, despite knowing the risk, the contractor was aware of the risk, still he has ignored certain safety protocols. Like the contractor is aware of the safety protocols, such as reinforcing scaffolding. स्कैफोल्डिंग का reinforcing किया जाता है, ऊपर आप स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, नीचे आपको सपोर्ट देना पड़ेगा. It is important, but intentionally he did not do that, or he did not do it properly as per the requirement. So this will fall under the category of willful act. Okay, and what was the intention? Why he has done it? To save time and cost. So it results into collapse of scaffolding. ये नीचे सब गिर जाएगा पूरा scaffolding ना. There is no support. There is no reinforcement. Reinforcement means support below the scaffolding, and this collapses, and that causes significant damage to the property. This kind of loss will not be payable because it will fall under the category of willful act. Another example is deliberate use of substandard material. Now, contractor knowingly purchases and uses substandard building material, low quality steel or cement to cut cost. As a result, the structure collapses and suffers severe damage during construction. Loss is not payable. So you have to establish that contractor intentionally, deliberately, knowing the consequences, he has utilized the substandard material. This is not payable. One more example, ignoring structural warnings. Project engineer issues a report that a certain section of the construction is compromised and requests immediate reinforcement. उसमें support देना है. उसके project engineer ने report दिया है. It is issued to the contractor, but contractor is ignoring. He chooses to ignore. Okay, and proceeds with construction. He ignores these warnings, and then ultimately that particular section collapses, causing major damage. This would not be covered. One more example I could find: unauthorized alteration of project plans. The contractor decides to alter the approved building design or plan without consulting the relevant engineers or authorities. Of course, the possibility of this kind to happen is very, very rare, because site engineers, they check each and everything, whether he's following the design criteria or not. Okay, defective design is different. Faulty and defective design, we are not talking. Here, design is perfect, but contractor is intentionally making some alterations to save time, but save cost. These changes lead to structural damage or defects. The policy would not respond for this kind of loss. Many more examples you can find, but these are the few examples just to illustrate what do we mean by willful negligence or willful act by the contractor or by his authorized representative. Both are responsible. Okay. Now, let us see about that exclusion. I told you, total or partial cessation of work. Now, one thing, this explanation is very, very important. Many people do not know. They feel, they are under the impression that once there is a cessation of work, our policy ceases to respond. Sorry, it is not a correct explanation. What it says, it is to be understood that this exclusion does not mean that nothing is payable once there is a total or partial cessation of work. Sorry, it is not correct. What it says, if the loss has taken place due to cessation of work, that alone will not be payable. Rest all other losses which has got nothing to do with cessation of work shall be paid. Now let us see the examples. If the cessation of work, if because of cessation of work, dry vegetation is not removed, okay, from the project site, and if it catches fire,
resulting into spread of fire and it damages the project properties, assets, such losses will fall under this exclusion, because here it is established that this loss is caused due to cessation of work. Had there not been a cessation of work, this dry vegetation would not have been there. Okay, these things would have been clear. अरे म्यूट करो, देखो किसी ने अनम्यूट कर लिया अपने को. गौरव, प्लीज म्यूट ऑल. किसी बुक पे तो जी आ रही है, किसी पे हल्दी आ रही है. सर आप unmute कर लीजिए. हाँ, मैं अनम्यूट कर लिया मैंने. ठीक है. Now this is regarding this dry vegetation. I have clarified this kind of losses would not be payable, but other losses like damage to property by earthquake, floods, cyclone, landslide, this has got nothing to do with cessation of work. So these would be payable even after cessation of work. Okay, so this concept should be very clear about this cessation of work exclusion. Now let us see what are the major exclusions under section 1 of the policy. The company will not pay. These are very important exclusions. And I will, after completion of this, I'll take few questions from the audience. One is policy excess. Each policy does not pay policy excess amount. Then loss discovered only at the time of taking an inventory. We call it inventory loss. It is also excluded in all policies. So the loss at the time of counting, at the time when the inventory of stocks was being taken by the concerned person, the stock in charge, the storekeeper in charge, that time he found, oh my God, here 50 items are missing. Or the cement bags, it should be, as per stock register, it should be 1000 bags, but here it is 800 only. So 200 bags are lost, misplaced. But this he found only at the time of taking inventory. So these are not payable. What it says, whenever the loss has taken place, if it comes to your notice, you claim, you will get it. But if you come to know only at the time of taking inventory, then these losses are not paid. Then normal wear and tear, gradual deterioration due to atmospheric condition. Okay, gradual deterioration. Normal wear and tear, gradual deterioration due to atmospheric condition, or lack of use, or obsolescence, or otherwise. So these kind of things, rust, scratching of painted surface or polished surfaces, or breakage of glass, this is not covered. For breakage of glass, there is additional provision, I'll explain. So these are the things, loss or damage to the property due to these reasons, causes, is not covered. Okay, because of rusting, because of scratching of painted surface, not paid, these kind of things. Gradual deterioration. Okay. The loss due to breakage of glass can, however, be covered by payment of additional premium. This is tariff provision. Nowadays, it is given free of cost also. It is up to the underwriter, concerned underwriter. There is no hard and fast rule. He can, many times I have seen underwriters are providing with some limits. They put a loss limit. Okay. Breakage of glass is covered up to 5 crores, 2 crores, 50 lakhs, that kind of thing. But your tariff says additional premium was supposed to be charged. And what was the premium rate in tariff days? CAR rate was supposed to be loaded by 25%. And excess on glass item was 10% of aggregate sum insured of all glass items. So these were the provisions of CAR tariff, which we have forgotten and we are not using it. Okay, we apply our common sense and we do it as per the market conditions. Second is loss or damage due to faulty design. Extension is available. If it is found that your collapse has taken place due to faulty design, not covered, but there are extensions available, add-on cover. Then cost of replacement, repair or rectification of defective material
So similar extension, this exclusion is there under EAR policy also, engineering policy also. Same is here. The cost of replacement or repairs or rectification of defective item or workmanship is not covered. This is excluded. Okay. If something is wrongly constructed or defective material was used, and later on it was checked at the time of inspection that contractor has used a sub-quality material, so that rectification cost, that portion has to be demolished and then rebuilt. That cost will not be paid. Okay. But it is limited to those items only. But if the loss has taken place, okay, to other items which are correctly executed items, okay, if they are also damaged nearby property where there is no defect, so correctly executed items are also damaged, okay, then it is paid due to some same defective material. If it is damaged, other items also which are not defective, then it will be covered, and the rest other things will not be covered. So what it says, the rectification cost will not be paid, but okay, but shall not be deemed to exclude loss or damage to correctly executed items resulting from accident. Accident हो गया, वहां पे defective material की वजह से half portion is collapsed, and that, अरे म्यूट करो भाई गौरव, अभी भी किसी का माइक ओपन है. हाँ, ठीक. Any query? Sir, I have a query. हाँ, बोलो. Sir, nowadays we are Yes, giving sir. cessation of work for 30 days or 60 days and brokers हाँ, are वो मैं asking for बताऊंगा, it. वो एक्सटेंशन के समय बताऊंगा. That we are doing. अभी right now we are seeing the policy condition. Extensions Okay, पे आएंगे तो we will talk about that. Okay. Okay, sir. Okay. So तो ये important है, ये E वाला exclusion. If there is a faulty, ये है आपका जो हो रहा है example of cessation of work. वो मैंने claim period बताया ना, वो dry vegetation वाला. जी जी. हेलो. हाँ, तो ये कोई पूछ रहा था भी उसमें सेसेशन ऑफ वर्क का क्या है एग्जांपल, है ना, तो उसका मैंने दिया. ड्राई वेजिटेशन अगर सेसेशन ऑफ वर्क की तरह हो जाता है, उसकी वजह से लॉस है, देन इट इज नॉट पेड, और अदरवाइज ऑल लॉसेस, एसटीएफआई लॉस ड्यूरिंग आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द वर्क इज स्टॉप्ड, देन दोज लॉसेस आर पेड. ओके. तो ये जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, दैट अलोन विल नॉट बी गिवन, बट रिमेनिंग लॉस विल बी पेड which are correctly executed. Then this list continues. Let us see other exclusions. The cost. एक मिनट रुको, अभी ये लिस्ट पूरा हो जाए फिर आपका क्वेश्चन लेंगे. ओके. The cost necessary for rectification or correction of any error during the construction unless it results into physical loss or damage. तो rectification cost जो है वो पे नहीं होता. This engineering policy also does not pay, and this policy also does not pay. Rectification cost or correction करने का cost for any error which has already taken place during the construction, it is not paid unless it results into physical loss or damage. अगर वो damage पूरा crack हो गया या गिर गया building, तब तो pay होगा. Otherwise, simple at the time of inspection, if it is found that this much construction is faulty, it requires rectification. That rectification cost will not be paid. That contractor will have to do it from his own funds. Then loss or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds. Many times files are also damaged during, suppose there is a fire in construction site office and your basic drawings, they are burned. So cost of remaking of those files, drawings, those things are not payable under the policy. Okay, all these things, checks, notes, securities, all these things are not paid. Then any damage or penalty, this is also a very important contractual liability, we call it.
any loss or damage or penalties on account of insured's non-fulfillment of terms of delivery or completion under the contract. So contract is, if it is delayed, and as per the contractual agreement, he was supposed to pay some fine for delayed period. So that kind of liabilities are not covered under the policy. Okay. Many times, lack of performance. The project was supposed to give certain performance level. Okay. So वो भी नहीं pay होगा if it is lagging behind. Understand? Operational deficiencies. ये भी होता है. Many times operational deficiencies आता है. During the operational stage, construction हो गया पूरा, उसके बाद जब यूज कर रहे हैं, that time कुछ deficiencies निकल के आ रहा है. CR policy will not pay. Okay, that kind of difference. Loss or damage to vehicles. देखो ये exclusion की वजह से मैं बोल रहा था. Which are licensed for general road use or waterborne vessels or machinery equipments mounted on or operated on fixed floating vessels. All these things are not a part of CR policy. CR policy will not pay. Okay. Loss or damage to vehicles which are licensed for road use. कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो है वो तो सीपीएम में कवर हो, वो डिपेंडिंग अपॉन दी उसका सम इंश्योर्ड कितना है, 25 लाख का कट ऑफ है ना, तो उसमें मेनी टाइम्स इट इज कवर्ड अंडर सीआर पॉलिसी एंड समटाइम्स व्हेन द सम इंश्योर्ड इज हायर दैट टाइम इट इज कवर्ड अंडर सीपीएम पॉलिसी. तो कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी इज डिफरेंट, वो उसमें कवर होगा. प्रिंसिपल्स जो उसके जो प्रॉपर्टी है, ओन सराउंडिंग प्रॉपर्टी, उसके लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है. एंड ये जो लाइसेंस रोड यूज वाले जो ये हैं तुम्हारे व्हीकल्स लाइसेंस्ड फॉर जनरल रोड यूज, दे आर नॉट कवर्ड अंडर सीएआर पॉलिसी. एक्सक्लूजन्स. ओके, नाउ टेल मी व्हाट वाज योर क्वेरी. द लिस्ट इज कंप्लीटेड. यस, हेलो, प्लीज कम आउट. यस. सो सर, जैसे फायर का जो टैरिफ होता है उसमें भी स्टोरेज ऑफ ओपन स्टोरेज एंड क्लोज स्टोरेज के दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. Just wanted to say that while the construction is happening, not every material can be stored under lock and key. So there are TMT bars, other things, and all the materials that has to be under open storage. So should we define in the RFQ open storage material separately and closed storage? Yeah, it is by default covered, and it is assumed that it will be covered at the time. It is covered. At the construction site, your construction material is, except cement. Cement is not supposed to be kept in open. It has to be in closed go down without any leakage or seepage because it catches moisture. So for cement, it is required. It cannot be left in open because it will be solidified if you keep it in open. Understand? Other material, वो सब वो सरिया वगैरह जो है सब यूज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और ये शटरिंग मटेरियल सर, आज की डेट में ना जितने भी शटरिंग मटेरियल्स हैं, they are made of expensive aluminum and expensive aluminum, but वो सब चोरी होते रहते हैं वहां से साइड से. तो those losses would be covered because they are stored in open only by default. नहीं, ठीक है. Provided security arrangements are there, because site is supposed to be secured. Fencing वगैरह होना चाहिए. और अगर ओपन खेत में ही पड़ा हुआ है सामान और कॉस्टली मटेरियल चोरी हो गया, so you have to check the underwriting क्या पॉलिसी में कंडीशन है. अगर उसमें वारंटी लगा हुआ है कि वो 24/7 वॉच एंड वार्ड फैसिलिटी शुड बी देयर, ये लगाते हैं वारंटी. अगर वो वारंटी लगा है एंड एट द टाइम ऑफ लॉस सर्वेयर फाइंड्स की वहां पे कोई वारंटी फुलफिल नहीं हो रहा है, देयर इज नो सिक्योरिटी गार्ड, वहां 24/7 क्या, वहां 6 घंटे के लिए गार्ड नहीं है, in that case those losses will not be paid. Theft losses will not be paid. It depends what is defined in the policy. If policy is silent, then everything is paid. फिर क्या प्रॉब्लम है? अंडरस्टैंड? ओके. अब इसीलिए देखो रूरल इरिगेशन के प्रोजेक्ट जो हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज गुड प्रोजेक्ट बिकॉज वहां पे मेटल कंडक्टर रहते हैं, वायर्स वगैरह रहते हैं, उसकी वायरिंग वगैरह करनी है, वो कंडक्टर्स चोरी हो जाते हैं. एल्युमिनियम के वायर्स रहते हैं पूरे. कॉपर तो इसीलिए यूज नहीं करते बिकॉज कॉपर इज वेरी वेरी कॉस्टली, बट एल्युमिनियम भी चोरी हो जाता है.
पाइप्स चोरी हो जाते हैं, जब लेइंग ऑफ पाइपलाइन के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां सब वॉच एंड वॉट फैसिलिटी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज दे आर इन रिमोट प्लेसेस, अनलेस द पाइप्स आर वेरी हैवी, कास्ट आयरन पाइप्स हैं 10 फीट के 15 फीट के लॉन्ग लॉन्ग पाइप्स विच कैनॉट बी लिफ्टेड, वो तो बचा रहेगा, बट अदर थिंग्स कैन बी स्टोलन इजिली, उसमें कोई कोई आश्चर्य की बात नहीं है. So you have to look at policy terms and conditions. Is it clear? ये 70 क्यों है पार्टिसिपेंट्स? बाकी ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन नहीं कर पा रहे? आर दे, क्या रीजन है? The registration is more and participants are less. What is the reason? Let me just see. किसी का कोई बेचारा ऐसा तो नहीं है जो अभी स्ट्रगल कर रहा हो? नहीं, किसी का मैसेज भी नहीं आया. मैसेज जो है नहीं, I don't know why participants are 71 only. Should not be less than 90 today. चलो, हाँ विजय, quickly. सर हेलो. अच्छा मेरा हाँ, क्वेश्चन सुनो सर एक मिनट विजय, सेशन विजय एक मिनट रुको. ये अभी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा आप रिकॉर्डिंग देंगे, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. जो हमारा ग्रुप है रिकॉर्डिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप. एक हमने ग्रुप बनाया है, एक तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है कभी पढ़ते नहीं है, उस मेल में ही लिखा हुआ है कि प्लीज ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप. जो आपको ज्वाइनिंग लिंक का मेल मिला है उसी में इनविटेशन में लिखा हुआ है, उसी ग्रुप का लिंक है, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप. क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग ये सब मैं उस ग्रुप पे ही डालूंगा, इंडिविजुअली नहीं भेजने वाला मैं किसी को. तो द इंटेंशन इज ज्वाइन दैट ग्रुप. ओके, विजय अरोरा बोल रहे हैं अनम्यूट करो. अच्छा, क्या है विजय जी, बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन है सेशन की वर्क को लेकर ही. इसमें पीरियड कुछ पॉलिसी में डिफाइंड है सर कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कुछ ऐसा है कि मतलब इस टाइम के बाद उसको वो लिया जाएगा, मतलब क्या? कंसीडर किया जाएगा सेशन? किस चीज का? सर सेशन का जो टाइम हाँ, पीरियड है. सेशन का मैंने बोला ना, उसका एक्सटेंशन की बात हम अभी करेंगे ना. देयर इज एन एक्सटेंशन अवेलेबल ओके फॉर कवरिंग ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग द सेशन पीरियड. अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे सेशन पीरियड को हम डिफाइन कर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, अब गवर्नमेंट का रूल कुछ आ जाता है, जैसे अब में पेंडेमिक आ गया या कुछ आ गया जहाँ पे हमने डिफाइन किया था ये, और जो पेनल्टीज की हमने बात की थी कि गवर्नमेंट की पेनल्टीज डिले की वजह से कवर नहीं होंगी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 साल या 1.5 साल किसी रीजन की वजह से होता है. या कोई पर्टिकुलर रीजन ऐसा भी है जहाँ पे उसको अलाउ किया जाता है और वो पेनल्टीज जो है वो पेबल होंगी? नहीं, पॉलिसी कभी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, पेनल्टीज का पेमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, because our policy is against fiscal loss or damage to the property and third party liability. तो ये penalties ना तो third party liability है, contractual liability है. Contractual liabilities are clearly excluded. वो गवर्नमेंट का अलग चलेगा और नहीं, ये वो कुछ नहीं. अरे वो यार, हमारा पॉलिसी विल नॉट रेस्पॉन्ड, कोई भी मजबूरी हो वो नहीं चलता. हमारा पॉलिसी क्या बोलता है, बस वी आर स्ट्रिक्टली सपोज टू फॉलो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम. इज दैट क्लियर? ठीक है सर, फाइन, परफेक्टली फाइन, थैंक यू. अच्छा, इनमें कोई और डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द एक्सक्लूजन? नो. तो वंस अगेन आई रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, प्लीज ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज उस ग्रुप में मुश्किल से अभी 20-25 लोग हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर हेजिटेंट इन ज्वाइनिंग द न्यू ग्रुप, न्यूली फॉर्म ग्रुप. उसके बाद एग्जिट कर देना. आप उसमें जो क्वेश्चंस आंसर होंगे वो उसका आप पूछना चाहें, इट विल बी लाइव फॉर 1 month only. 1 महीने में जिंदा रखूंगा बिकॉज ऑफ योर क्वेरीज, बिकॉज ऑफ सेंडिंग ऑल दीज मैटेरियल. ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भेजने के बाद उस ग्रुप को हम डिसमेंटल कर देंगे. ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू. नाउ पीरियड ऑफ कवर, policy period. What it says, policy starts from excavation work or commencement of work or arrival of first consignment at construction site, whichever is earlier. Okay, so this is the start date and shall expire on completion and handing over of the project to the principal. Handing over, provisional handing over. Okay,
or final handing over as the case may be. Okay. So normally provisional handing over is done before the commencement of maintenance period, or on date which is specified in the policy, whichever is earlier. तो अगर हैंडिंग ओवर पहले हो गया, पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी, या फिर हैंडिंग ओवर नहीं हुआ, पॉलिसी एक्सपायर हो गई, then policy ends at the date which is specified in the policy. Okay, unless you extend the policy. In case, now this is also very important. In case some portion or section of insured contract works, they are taken over, या तो पूरा ले लिया या हाफ ले लिया, आधा पूरा हो गया. रोड कंस्ट्रक्शन में ये बहुत होता है. The road which is already completed, some section of the road it is completed, so it is put into use. So either it is taken over by the principal. In road construction, it is not taken over by the principal. It is put into use for the intended service. So any portion of the project, if it is taken over by the contractor, by the principal, or it is put into use by the contractor prior to policy expiry date, then it will go out of the policy coverage. This point is very, very important. And many times insureds, they do not worry about this. They are not concerned about this, and later on they find their claims are declined just because that portion was completed and it was handed over. So policy ceases. So in case of road project, I was telling, many times it happens part of the road is completed or the construction is done halfway. One side of the road is closed. The contractor completes that patch of 50 meters or 100 meters. By the time the other side of the road is put into use, and once this road is completed, okay, entire carpeting is done, then it is open for public and the other side of the road is blocked. This is the way running roads constructions are done. Okay. So in that case, the portion which is completed and put into use, strictly speaking, our policy does not pay any loss or damage to that completed portion unless some extension is taken. So nowadays, put into use add-on cover is taken by the clients, and it is given freely because everybody knows the contractor has got no control on the completed section. So that portion, strictly speaking, policy does not cover, but by way of extension, the policy covers loss or damage to completed portion also, until the entire road is 100% completed and handed over to the principal. So that is the end of policy. Is it clear? Okay, let us proceed further. Now, at the latest, policy shall expire on the date expired is specified in the policy. But if the construction work is not completed, then company may extend. This may is very important. It is not taken as granted. Company may refuse also, or they may put some warranties on extension of policy, depending upon the claim ratio. Suppose the project period is 5 years and the insured has already taken 10 claims under that. Company may not like to extend the policy. Or in case they extend, they will impose some higher policy excess during the extension period. They may increase the policy rate. Okay. So all these things are there, subject to payment of additional premium, of course. The policy can be extended. Okay. Any question on this period of cover? Yes, please. This point is very important. Put into use operation. Very nice. So it means fundas are clear. Very good. Now provisions applicable to section 1. Now various memos are there. Many things we do not know. So I have decided to
explain all these things. Memo 1 says sum insured. What is the requirement? What it says, the sum insured stated in the schedule should not be less than the completely erected value of the property, inclusive of rate, custom duty, erection cost, and insured undertakes to increase or decrease this amount. Okay. In the event of any material fluctuation, material fluctuation in the level of wages or prices, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same is recorded on the policy. Now, what it says, that your sum insured must represent the total completely erected value of the project. And in between, during the currency of the policy, if there is some likely increase in cost of material, which increases the total project cost, then midterm increase in sum insured is permitted. Okay. Midterm increase in sum insured can be done, but it is not done on pro rata basis. I'll explain later on. Uska hai midterm increase ka, there is a separate provision. So in short, I'll explain. Your sum insured should be total completed value. If there are changes, you are supposed to incorporate in the policy, okay, by paying additional premium. And additional premium has to be paid for the entire project period, not pro rata. It is not like fire. Here, 100% premium is charged for the entire project period. So whatever is the policy rate, that has to be applied. Now, in case it is found that sum insured is less than the amount required to be insured. Total project cost आपका आ रहा है X and your sum insured is lesser than X, then it will be underinsured and the amount recoverable under the policy shall be reduced by the proportion. Okay, sum insured divided by sum required to be insured. ये underinsurance लग जाएगा. Now, for example, if your total completed value of the project is 3,000 crore and the policy is taken for 2,700 crores, so this 300 crores is the underinsurance. The 27 divided by 3,000, that will be the underinsurance factor, and that will be applied on all loss payable under the policy. Okay, this is average clause. Now, another is memo 2. If says that if sum insured under the policy representing the complete value of these shall be adjustable at the completion, refund of premium. We are talking of refund of premium. What it says, that at the end, after the the end of the policy, the sum insured which is declared, that is adjustable at the completion of construction on the basis of actual value of declared by the insured in respect of freight and handling charges, custom duties. These three items, freight, handling charges, wages, and custom duties, these components are subject to adjustment, okay, at the end of the policy period. Because initially it was estimated, उसने अंदाजे से लिया था, handling charges वगैरह, it was estimated, okay. Now later on he finds that it is lesser than what he estimated, so that refund is considered, and the difference shall be met with the payment at the rate agreed by the insured, as the case may be. अब इसमें provision तो ये है, at the rate to or by the insured, मतलब ये adjustment दोनों साइड से होगा. At the end of the policy period, अगर पता चलता है these charges were not adequate, तो additional premium is required to be paid. लेकिन additional premium कभी pay नहीं होता, only refund is done under the policy, as you all know. So this adjustment is done only in respect of handling charges, freight charges, custom duties, and construction cost. Construction cost, वही cost of construction. I have already explained. What it says, it is very important. Any increase and decrease in prime cost of the material, okay,
is not subject matter of premium adjustment. अगर बाद में लगता है कि मटेरियल ही कम लगा, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में 3000 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया और फाइनली जो था मटेरियल वो उसमें 2900 का ही लगा, then there is no refund of premium for that. रिफंड नहीं होगा उसमें at the end of the policy. Refund जो होगा only in respect of these charges. Okay. Now third is reinstatement of sum insured. What it says, in the event of loss or damage, okay, if the sum insured undertakes policy of insurance for the sum insured, the insured undertaking to pay pro rata additional premium after the loss in order to reinstate the sum insured. Additional premium is payable on the loss amount from the date of loss till expiry of period of insurance. Like any other policy, in fire also the same provision is there, engineering policies also same provision is there, operational policies same is here. After the loss, insured is supposed to pay additional premium to reinstate the policy sum insured. Okay, if 10 crores claim is taken, then additional premium from date of loss till expiry of policy will be charged on pro rata basis to reinstate the policy sum insured. Okay, now basis of loss settlement, this is very important. Now what it says, in case of damage which can be repaired, then cost of repair necessary to restore the property to the conditions immediately before the occurrence of damage less salvage, this is what is paid. In case of repairs, if the damage is found repairable, then the cost of repairs necessary to restore the property to the condition immediately before the loss, उसी लॉस की कंडीशन पे, लॉस से पहले जो उसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन थी वही रेस्टोर करने के लिए जो अमाउंट जरूरी है, that shall be payable under the policy less salvage. Salvage has to be deducted. There is no concept of depreciation because everything is brand new. प्रोजेक्ट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, ऑपरेशनल पॉलिसी में डेप्रिसिएशन होता है. यहाँ क्या होगा, वैल्यू होगा, अंडर इंश्योरेंस होगा और सैलवेज होगा. ओके, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स और जो भी है उसका जो आया खर्चा लेस सैलवेज. ओके, उसके बाद अंडर इंश्योरेंस लग जाएगा, उसके बाद पॉलिसी एक्सेस लगेगा. इन केस ऑफ टोटल लॉस, व्हाट इट सेज, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर ऑकरेंस ऑफ द लॉस लेस salvage, this shall be payable. However, only to the extent cost claim has to be borne by the insured, है ना. मतलब जितना आप एक्चुअल वैल्यू में जितना खर्चा आ रहा है, that actual value has to be borne by the insured. What is supposed to be borne by the insured, that is payable under total loss. And to the extent they are included in policy sum insured, वही खर्चे पे होंगे जो कि which are a part of sum insured, है ना. अब कोई चीज जैसे वही है, टैक्सेस की बात है, कस्टम ड्यूटी है. इफ कस्टम ड्यूटी इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिसी सम इंश्योर्ड, इट इज नॉट पेएबल एट द टाइम ऑफ लॉस, इट विल बी एक्सक्लूडेड. तो दीज थिंग्स आर क्रॉस चेक्ड बाय द सर्वेयर एट द टाइम ऑफ लॉस. अगर फ्रेट उसने इंक्लूड नहीं किया है लैंडेड कॉस्ट निकालते समय, these components will be checked by the surveyor at the time of loss. If freight is not included, custom duty is not included, so these items are not payable at the time of loss. Okay, all damages which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing equals or exceeds the value of the property, then it is a constructive total loss. This is the definition of constructive total loss. Cost of repairs exceeds the value of the property at the time of loss, मतलब वही market value, then in that case the settlement shall be done as provided in B. B means total loss. ये रहा B. Okay, constructive total loss के केस में आप उसको market value ही पे करेंगे, actual cash value. Okay. Now basis it continues. The cost of provisional repairs will be borne by the company. अगर कोई provisional repair पहले ही कर लिया है before the arrival of surveyor, then it will be taken into consideration. Okay, and provided
it constitutes the part of final repair. कि फाइनल रिपेयर का ही हिस्सा है, कुछ और आपने रिपेयर नहीं किया, पता चला डैमेज हुआ इधर के साइड में और ये प्रोविजनल रिपेयर के नाम पे आपने पुराना कोई डैमेज आपने रिपेयर कर लिया बिल्डिंग का ये पार्ट, दैट इज नॉट. इसी पोर्शन का which constitute a part of final repair, if you do it in advance as a provisional repair which was required, okay, and justified, then it will be taken into consideration. And secondly, this provisional repair does not increase the total repair expenses. और खर्चा बढ़ ना जाए आपके रिपेयर करने से. Okay, so these things surveyor will decide. Whatever amount you have spent, that will be paid, subject to these two conditions. One condition, it is the part of final repair and it does not increase the total repairing expenses. Then cost of, this is very important, cost of any alteration, additions or improvements shall not be recoverable under this policy. If you try to alter the construction, because we are supposed to provide the expenses to restore the property back into the same condition, design, and whatever was the condition prior to the loss, in the same position, whatever expenses are needed, that are supposed to be paid. Any improvement at the time of construction, or you want to add something, it is all not payable under the policy. Okay. Then memos, it continue. Memo number 5, it talks about extension of cover, policy extension. Any extra charges incurred, acha ye extension of cover, not policy extension. These are the basic extensions. Okay. What it says, any extra charges incurred in overtime, works on holiday, express freight, excluding air freight, are not covered unless company agrees to consider this at additional premium. So basically these charges are not payable, but add-on cover is available. In variable, this add-on cover is given under the policy. Okay. Then CPM, construction plant and machinery. Okay. For this, just a minute. Yes. Hello. Let me. So construction plant and machinery, what it says, any loss or damage to CPM, it excludes if CPM cover is granted under your CAR policy. As I said, sometimes it is a part of your CR policy, CPM cover, and sometimes CPM policy is given. In both situations, this exclude any loss caused by its own explosion or by its mechanical or electrical breakdown or dearrangement. So this mechanical or electrical breakdown or explosion within the plant or machinery is excluded under CPM policy. Okay. CPM policy does not cover your MBD. This is a thumb rule, breakdown losses. But nowadays, we have become very smart. So we have started giving extension to include your MBD losses also. We are not happy with our loss ratios. We are not happy in falling off your premium, policy premium. We want to kill ourselves. So I have seen many underwriters have started giving this extension, to my surprise, and that too free of cost. Horrible situation current. Then surrounding property, I have already told, so there is an extension available. Now what it says, loss or damage to the surrounding property adjacent to the site and belonging to or held in care, custody or control of the principal. Okay. At the contractor or the contractor only be covered if occurring directly due to construction of item insured. This point is very important. Construction activity से अगर loss होता है, owner surrounding
प्रॉपर्टी का, then only it is payable under owner surrounding property extension. People are under the impression कि ओनर सराउंडिंग OSW अगर कवर कर लिया then flood losses भी कवर हो जाएंगे, earthquake loss भी कवर हो जाएगा. Sorry, AOG perils are not covered. Only losses relating to your construction activity, उसकी वजह से आग लग गया, उसकी वजह से impact damage हो गया, okay? कोई आइटम ऊपर से गिर गया, योर ओनर्स की प्रॉपर्टी साइड में उसका बंगलो है फॉर एग्जांपल, और साइड में वो एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर रहा है ओनर, तो ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी में उसका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो अगर डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दैट इज ओनली कवर्ड. लेकिन अगर वहां फ्लड हो गया और फ्लड लॉस हुआ, देन इट इज नॉट पेबल. साइक्लोन से उसके घर उड़ गया, नॉट पेबल अंडर दिस एक्सटेंशन, ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी एक्सटेंशन. ओके, अच्छा, and happening during the policy period, of course, or then provided a separate sum insured for the same has been entered in a policy schedule under section for principal surrounding property. तो ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन आपको लेना पड़ेगा इसके लिए. अब इसमें एक और बड़ा है कि एक और रूल है जो कि फॉलो करना चाहिए, एंड आई ऑलवेज एडवाइज कि ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? एनी प्रॉपर्टी विच वाज एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस कवर. सीआर पॉलिसी लेते समय जो ओनर का प्रॉपर्टी वहां था, दैट इज ओनली कमिंग एज ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी. व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव सीन इन मेनी प्रपोजल, जैसे एक टावर बन रहा है, हाई राइज बिल्डिंग, 5 उसके फ्लोर कंप्लीट हो गए, उसमें भाड़े पर उठा दिया उसने, ऑक्यूपेंट्स आ गए. नाउ रिमेनिंग 5 फ्लोर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड. नाउ द कॉन्ट्रैक्टर सेज कि ये जो 5 फ्लोर मेरे जो हो गए हैं, ये प्रिंसिपल ने हैंड ओवर कर लिए हैं, इट इज टेकन ओवर बाय द प्रिंसिपल, तो नाउ इट ट्रीट इट एज ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी. सॉरी, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है उसको आप ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते. उसके लिए आपको सेपरेट कवर लेना पड़ेगा. दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी. सो ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी वो है विच वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. This cover does not apply to construction or erection machinery, plant and machinery and equipment. तो कॉन्ट्रैक्टर्स के इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी कुछ रखी हुई है, वो सीपीएम में जाएगा, ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बिकॉज अंडर दिस देयर इज अ क्लियर कट एक्सक्लूजन फॉर दिस. ओके, नाउ रीस्टेटमेंट ऑफ इंडेमनिटी लिमिट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया. इसमें क्या है? रीस्टेटमेंट ऑफ इंडेमनिटी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम after occurrence of the claim can be allowed for extensions like express freight, overtime, surrounding property. इन सब में भी आपका जो है, however, in respect of ये इन additional premium लेके reinstatement of indemnity limit in case, देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, all these extensions like express freight, overtime, surrounding property, इसमें अगर loss हो गया so many times we forget to restate the sum insured of these add-on covers. What it says, memo 9 says that after the loss, आप main sum वो जो है property damage जो claim हुआ उसका तो reinstatement कर रहे हैं, but these add-on covers में भी अगर claim हुआ है, आपने freight and overtime charge कर लिया, तो उसका भी reinstatement आपको करना पड़ेगा. You are supposed to reinstate the sum insured of these add-on covers also. Okay. Now, third-party liability. Third-party liability cannot be granted during the extended maintenance period. This is memo 10. This is also very important. Tariff provision. It clearly prohibits granting TPL cover during the extended maintenance. Maintenance में TPL cover मना किया है. It is prohibited. Unfortunately, आज की डेट में ये भी दिया जा रहा है, which is not correct. इसमें liability आपका बहुत बढ़ जाता है, and you are not getting any premium. Okay, so these are the tariff provision I am supposed to tell you. I am telling you. Now, another thing, what it says, it is warranted that insurer will indemnify unforeseen accidental loss or damage to temporary access roads. अब temporary access roads में and other temporary structures if such losses or damage occur
prior to such road being completed or taken into use. So this is very important, this particular thing. Whenever a temporary road is constructed, these roads are constructed, temporary godowns are made, temporary houses are made. So they are covered under the policy, not for the entire policy period. They are covered only till the time such roads or other construction work they are being completed, till the time prior to being completed, prior to completion, or they are put into use. तो ये बहुत बार होता है, टेम्परेरी रोड उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी चलने लगी, उसने ट्रक और वो अपने सब व्हीकल यूज करना शुरू कर दिया. Once it is done, so this goes out of the purview of policy. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So that means no loss shall be payable in respect of temporary access road structures if the same is taken into use by the contractor for the intended purpose. अब जैसे उसने गोडाउन बनाया टेम्परेरी, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली अगर कोई लॉस होता है, देन ओनली इट इज कवर्ड. एक बार गोडाउन वंस इट इज रेडी, उसके बाद उसने सीमेंट रखना शुरू कर दिया उसमें, देन इट गोज आउट ऑफ द पॉलिसी कवरेज. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर इज सपोज टू टेक अ सेपरेट पॉलिसी. फायर पॉलिसी ले लीजिए आप उसका गोडाउन का, बट योर CAR पॉलिसी विल नॉट पे. सेम इज द केस विद टेम्परेरी रोड. वंस इट इज पुट इनटू यूज, इट गोज आउट ऑफ द पॉलिसी कवरेज. इसका भी एक्सटेंशन आजकल हम लोग देते हैं, ये पुट इनटू यूज कवर फॉर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वी गिव. ओके, बट विदाउट दैट एक्सटेंशन इट इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी. अच्छा फ्रेंड्स, अभी टाइम क्या हो रहा है? लेट मी सी. टाइम हो रहा है 11:41. तो हम लोग जो है थोड़ा ब्रेक लेंगे and we will assemble at 11:50. Hello. Bolo Vikas. Sir, audible? Audible. Okay. So there are 3 quick questions. इसमें you had spoken about one is policy period. Now policy period, in case sometimes it happens that company insist कि जहाँ पे आपने contract period जो आपके contract में लिखा हुआ है, from the principal is say for example 1st of January. Now due to unforeseen circumstances 4 महीने तक वो प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया. So sir, start date of the project को कैसे define करेंगे? It should be at the willful this of the contractor that he says that I am going to start, or it will be from the start of the contract date only compulsory. हाँ, इसका है एक्चुअल आपको देखना है. अगर वहां पे प्रोजेक्ट एक्टिविटी कुछ भी चालू नहीं हुई है, लैंड पे कोई काम नहीं हुआ है, एक्सकेवेशन काम भी नहीं हुआ, या फिर कोई वहां पे कोई मटेरियल नहीं पहुंचा, एक्सकेवेटर पहुंचता है सबसे पहले सिविल कंस्ट्रक्शन. तो द डे इट स्टार्ट्स डिगिंग द अर्थ ग्राउंड, दैट इज द स्टार्ट. या पहले दिन वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंच गया, दैट इज टेकन एज द अराइवल ऑफ कंस्ट्रक्शन. और अगर प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है तो उससे हमें मतलब नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न. वो 1st जनवरी लिखा है, लेट इट बी 1st जनवरी. इफ द प्रोजेक्ट इज कमेंसमेंट डेट इज स्टार्टिंग in March, then we will take from March. Okay. Or second question, what else? Second question is, sir, आपने बोला था that in case of half building which is constructed in owner surrounding property, so in that case abhi extension of work is happening. So he has from 1st to 10th floor has been delivered, given to the principal, and he has handed over the entire thing. Now that उसके बाद after 1 year this guy gets another extension and उसके पास OC आता है, OC के बाद उसको आता है contract की another 11 floors have to be constructed. In this, what will be the basis of sum assured? Because owner surrounding property that time this 10 floors is also there. तो उसमें हम 0 से लेके पूरी नीचे वाली 10 floors का भी sum assured add करेंगे at the time of contract कि it is only from 11 to 20th, sir. नहीं, ये पार्शियल. देखो मेरा समझ ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे. Some of the underwriters they will do it like that. They will apply their brain कि कंस्ट्रक्शन 11 से 20 हो रहा है, तो we will take the cost that only from 11 to 20. But it is not the correct way to decide the sum insured. In such cases, entire whole building is to be taken into consideration. है ना, पूरा ही प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाएगा, because you cannot leave the bottom portion.
उसको ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. That will be a part of your construction because there is every possibility of damage to the constructed building. नीचे का 0 से 1 तक का जो है 1 to 10 वो भी डैमेज हो सकता है because of construction activity at the upper floors. इसलिए entire building उसका total जो estimated completion cost है that is supposed to be taken for the project sum insured. Okay, हाफ that will नहीं, be a part of पूरा it. लेना पड़ेगा. अगर वो बिल्डिंग बाजू में बन रहा है देन इट विल बी टेकन. फिर ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है वो ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा एंड बाजू वाला बिल्डिंग जो बन रहा है दैट विल बी टेकन एज प्रोजेक्ट सम इंश्योर्ड. बट इफ द कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सेम बिल्डिंग then this entire building cost will be taken into consideration as project sum insured. Achha. Okay, so entire value has to be constructed. Yes. What else? Sir, two more questions. OSA और TP का जो हम लोग सर 20% लिमिट लेते हैं, 10% लिमिट लेते हैं, that is it a part of tariff? Because it is always assumed, वो दे देते हैं कि this should be 20% of sum assured, this is 10% of sum assured. इसको कहीं सर नोटिफाइड है ये कि कितना लिमिट ले सकते हैं या बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी ले सकते हैं? बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हम लोग 25% दे रहे हैं. मैक्सिमम 25% तक ले सकते हैं. हाँ जी. Is it a That part we of are giving. और टैरिफ में एक बार दोबारा हमें देखना पड़ेगा. शायद टैरिफ में इट इज मेंशन्ड एज 10%. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ये मैं देख के तुम्हें रिवर्ट करूंगा. उसमें कुछ लिमिट दिया हुआ है. इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज डेफिनेटली लिमिटेड. या तो 10% होगा या कुछ. देखो हमारे गुरुजी बता देंगे. सर कुछ याद आ रहा है आपको? इफ यू आर देयर, गुजर साहब, आर यू देयर? अच्छा, अभी शायद वो भी चाय पी रहे हैं. नो प्रॉब्लम. तो इसके बाद हम विल डिस्कस दिस. ओके, ठीक है सर. लास्ट क्वेश्चन ओनली इज दैट ये अपना जो आपने एक वर्ड बोला था दैट प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस. वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट. तो ये जो हेल्ड इन ट्रस्ट है सर, एट द टाइम ऑफ सम अश्योर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है, तो हेल्ड इन ट्रस्ट की भी वैल्यू हमको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू? नो. हेल्ड इन ट्रस्ट इज सेपरेट. उसका तो अलग से आपको जब वो तुम एक्सटेंशन लोगे, ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन लोगे, तो उस समय जो उसका सम इंश्योर्ड बताओगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर ओएसपी, ओएसडब्ल्यू, ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी ओएसपी, तो उस समय आप उसको लेंगे. लेकिन हेल्ड इन ट्रस्ट को आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे. ओके सर. ओके, थैंक यू. ठीक है, गुड. सर गुड आफ्टरनून. नमस्कार. यस सर, डिमोलिशन रिस्क को क्या डिक्लाइन रिस्क माना जा रहा है सीआर में? देखिए, व्हेन स्टैंड अलोन डिमोलिशन इज नॉट कवर्ड. केवल अगर प्रोजेक्ट केवल डिमोलिशन का है देन इट इज कंसिडर्ड एज डिक्लाइंड. But sir, there are certain agencies, if you know, who are specializing in this and there is an insurance need in them. तो इसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनीज को समझ के इसका आईआरडीए में फाइलिंग करना पड़ेगा. एंड उसके रेट्स, बिकॉज प्रीमियम रेट्स हैव टू बी हायर. मिनिमम नेट कैट पे तो ये डिमोलिशन रिस्क का इंश्योरेंस नहीं हो सकता ना. तो वो प्रीमियम रेट्स फायर करके देन वी कैन स्टार्ट गिविंग. बट राइट नाउ अभी तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसका एक्सक्लूसिवली फॉर डिमोलिशन. बट इफ डिमोलिशन इज अ पार्ट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कुछ पोर्शन को तोड़ के दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, then that can be considered, that it can be taken as a part of your CR policy. Okay, demolition के लिए हम कुछ higher access लगाते हैं, that is a underwriting parameter कि for normal construction a normal access, and for demolition portion during the course of demolition of the building, उसमें पूरा collapse होने का ज्यादा चांस रहता है at the time of demolition. That is the biggest risk. आप थोड़ा सा demolish करने के जा रहे हैं, उसमें पूरा collapse हो गया, तो जो उसका जो रेजिडुअल वैल्यू जो निकल के आना था, द मटेरियल और द मशीनरी और सम ऑफ द पोर्शन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी रीयूज्ड, वो टोटल लॉस हो जाता है इन केस ऑफ कोलैप्स. दैट इज व्हाई वी ट्राई टू चार्ज हायर प्रीमियम एंड वी ट्राई टू अप्लाई हायर पॉलिसी एक्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द रिस्क. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक ने और हाथ उठाया था. हु इज द अदर पर्सन? Let me revert to all queries. हाँ. Yes. Anupama, you can unmute yourself.
Hello, can you hear me, sir? Yes, I can hear you. Yeah. Please. Sir, can you please explain temporary access road once again with an example? अच्छा, टेम्पररी एक्सेस रोड का ये कहाँ गया? ये रहा. What your policy says, this is the tariff provision I am telling, that temporary access road or any other temporary structure or construction, temporary sheds, temporary godowns, temporary buildings, offices, okay, that kind of temporary construction work, because it is to be declared separately while giving the policy sum insured. उसको भी मैंने बताया था. तो उसमें टेम्पररी कंस्ट्रक्शन वर्क अलग से देना है, परमानेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स अलग से सम इंश्योर्ड दिखाना चाहिए आइडियली इन पॉलिसी while calculating the policy sum insured, project sum insured. So in such cases, temporary access roads or temporary structures, they are covered only till the time they are under construction. They will be out of the policy coverage once the construction is over and this is completed or it is taken into use, it is put into use for the intended purpose. जो उसका purpose था उसके लिए इस्तेमाल होने लगे by the contractor. So whichever takes place, या तो construction हो गया या put into use हो गया, and this policy is ceased. Policy ceases to include that cover. So what it means, the in respect of temporary access roads or structure, the same is, if the same is taken into use by the contractor, then no cover is available under the policy. Is it clear? Okay. अब इसके लिए भी क्या करते हैं, sometimes temporary access road का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए what we say कि उसका extension दे देते हैं. जैसे temporary godown है, उसको भी extend कर देते हैं, but subject to this terms and conditions of that extension. But strictly speaking, policy does not cover that. अच्छा, अब ये है provision for installment facility. Okay. Now this installment facility can be granted under the policy subject to following conditions. Project period should be more than 12 months. Last installment should be collected at least 6 months before completion of the project. 6 महीने पहले आपका वो आ जाना चाहिए. Minimum gap between the two installments shall not be less than 3 months. This is another condition. And this is the most important condition. First installment should be 5% higher than other installments. Okay. अब ये 5% क्या है? Second installment और third installment से 5% higher नहीं है. 5% of total premium. Okay. तो पूरे का 100% premium का 5% should be higher in comparison to other installments. इसमें एक confusion बहुत होता है underwriters को. They check the first installment should be higher, 5% higher than other installments. ये लिखा हुआ है, लेकिन higher by higher 5% of the total premium. Okay. So in case of major loss, all pending installments to be collected before settlement of the claim. जितने pending installment है वो सब collect करें. Then refund of premium for early completion of project. So in case the project is completed before the policy period, before the end of the policy, then refund can be allowed subject to following conditions. The period of insurance should be 18 months and more. Notice for early completion should be given 30 days before completion. Claims experience should be less than 60%, then only refund is allowed. Minimum period for which refund can be allowed is 3 months. 1 महीने पहले पूरा हो गया, there is no refund. Minimum refund period should be minimum 3 months. And refund of premium will be allowed only after reworking of premium. Okay. अब reworking of premium से मतलब यह है, अगर 6 महीने पहले प्रोजेक्ट पूरा हो गया and 36 महीने का प्रोजेक्ट था, now you will calculate the premium, recalculate the premium for 30 months. और फिर जो difference of premium होगा, that will be allowed. Okay. अगर कोई doubt है, please raise your hand. Now let us see the policy access.
now we are talking of CAR and ER policy, दोनों के लिए combined है. This is as per the market agreement. Now we are not on talk of tariff axis. Tariff axis बहुत पुरानी हो गई. तो as per the market agreement, these accesses, policy access, they were enhanced कि हम लोग रेट डाउन कर रहे हैं तो कम से कम पॉलिसी में एक्सेस तो कम से कम ठीक से लगाओ. एटलीस्ट ये दिस वाज अ गुड डिसीजन टेकन बाय ऑल अंडरराइटर्स एंड स्ट्रिक्टली वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द सेम. अदर देन इट इज कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स, उसके लिए अलग है. कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के अलावा पॉलिसीज हैविंग सम इंश्योर्ड अप टू 1500 करोड़ तक की जितनी पॉलिसीज हैं उसमें ऑल टैरिफ एक्सेस, जो भी टैरिफ में एक्सेस थी, they will be increased by 5 times. And from 1500 to 2500, all projects, this tariff access will be increased by 10 times. And all policies having sum insured above 2500, okay, then this tariff access has to be increased by 15 times of the erstwhile tariff access. तो उसको बस उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए. okay. एलॉप का टाइम एक्सेस 30 डेज है प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. अभी एलॉप की हम लोग बात नहीं करेंगे. वी आर टॉकिंग ऑफ सीआर. एंड फॉर स्पेशलाइज्ड रिस्क, जैसे स्पेशलाइज्ड रिस्क क्या है? ऑल वर्क्स इन वाटर, डैम, कैनाल, हाइड्रो, टनल्स. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ सम इंश्योर्ड, द मिनिमम एक्सेस शैल बी इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स. यहां पे क्या है? 15 गुना है फॉर प्रोजेक्ट्स अबव 2500 करोड़. इन दिस कैटेगरी फॉर स्पेशलाइज्ड रिस्क, irrespective of sum insured, even for 500 crore project, the tariff access will be increased by 15 times. Okay, this has been agreed. Now this is all about basic. We will see some of the add-on covers. We will look at clearance and removal of debris. This is one of the basic cover. What it says, the policy extends to cover expenses necessarily incurred, okay, with the consent of insurer, okay, in demolition or removing the debris of the portion of the property destroyed or damaged by any peril here insured hereunder, okay, as insured against. So this is the cost and expenses which are incurred by the insured in demolishing or removing the debris of damaged portion of the building. उसको हटाने का, clearing and removing, वो expenses pay करते हैं. And the limit is inserted, okay, in policy. There is no hard and fast rule. It is normally given up to 10% of claim amount. This is the limit normally which is given. And in fire policy it is still less. उसमें तो 1% of debris removal is 1% of claim amount है. यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लिमिट दे देते हैं. And for external or foreign debris, पहले this was not covered, but later on this has been agreed by GIC for foreign debris or external debris. In flood losses, many times external debris that is also coming at the construction site. Okay, so उसको हटाने का खर्चा काफी आता है. तो this is with mutual consent it can be done only for large risk. लेकिन आज की डेट में ये लिमिट फॉलो नहीं हो रहा है. Even for 1000 crore project, external debris cover is granted. Separate limit is granted for external or foreign debris. Now another is holiday, extra expenses for work on holiday, express freight, excluding air freight. Air freight नहीं, express freight हम लोग cover करेंगे. उसके लिए ये add-on cover है. As I told you, in basic policy these things are not covered unless it is specifically agreed. So here is the extension. What it says, this covers payment of extra charges for overtime, night works, works on public holiday, express freight, including, not excluding, including air freight. Okay. Provided always that such extra charges are covered in connection with any loss or damage to insured item recoverable. Okay. Extra charges are incurred. तो ये जो खर्चा जो करेगा following the loss on these expenses, okay, these items that will be paid under the
policy in addition to claim amount. Air freight के लिए can be allowed on demand subject to charging additional premium, है ना, on selected indemnity limit subject to additional excess. Air freight के लिए अलग से excess लगाते हैं on payment of additional premium. Okay. Now owner surrounding property. This I was talking about. Just see, look at the wordings. This extension covers loss or damage to surrounding property of the owner located at project site if the damage is caused directly due to construction activity. Okay. Taken in construction activity covered under the policy, and it is to be taken under brownfield project. There are greenfield project and brownfield project. Greenfield project वो होते हैं जहां पे सीधे लैंड के ऊपर काम हो रहा है, there is no other construction at all. And brownfield projects वो हैं जहां existing plant already है और वहीं पे आप extension कर रहे हैं, तो उस केस में ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी आएगा, बिकॉज पहले से वहां प्रॉपर्टी है क्लाइंट का, इंश्योर्ड का, वो इंश्योर्ड नहीं प्रिंसिपल का. उस केस में ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी एक्सटेंशन आएगा. और जहां ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वहां पे दिस एक्सटेंशन इज नॉट नीडेड बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट. This extension does not apply. Ab owner surrounding property does not cover construction, erection machinery. I already told CPM machinery, plant and machinery, including temporary buildings जो हैं, temporary construction building, उसके लिए cover नहीं है. Owner surrounding property will not be taken into consideration. And part of the project which is handed over or put into use, उस पे भी owner surrounding property extension नहीं होता. Okay, which is put into use or which is already handed over. इसका भी लिमिट डिफाइन रहता है. Okay, then escalation clause. Escalation clause provides for escalation in sum insured up to the selected sum insured, and claim will be settled at increased replacement construction cost. Escalation जब आपका होता है तो उसमें escalation amount is added to the sum insured. Okay, so that at the time of loss, escalation percentage 100% इसमें add कर देते हैं. This is the difference between fire policy and this is the difference between this project insurance policy. In project insurance policy, if the loss takes place even after 7 days or 10 days, अगर कोई loss हो जाता है, then escalation is available to the full extent. 20% escalation दिया है, पूरा एस्केलेशन उसको 6 महीने बाद भी मिल जाएगा, 3 महीने बाद भी मिल जाएगा. अंडरस्टैंड, दिस इज द एडवांटेज, एंड दैट इज व्हाई मिड टर्म इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का चार्ज करते हैं. वो वहां पे प्रोरेटा नहीं लगाते, यहां भी प्रोरेटा नहीं लगाते. द फुल परसेंटेज इज अवेलेबल ऑन एस्केलेशन अमाउंट. नाउ अंडर इंश्योरेंस कैसे अप्लाई होगा? अगर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन एज ऑन डेट ऑफ लॉस एक्सीड्स द ओरिजिनल वैल्यू प्लस सेलेक्टेड परसेंटेज वैल्यू. जितना सेलेक्टेड 20% है तो ओरिजिनल सम इंश्योर्ड प्लस 20%, इसको ऐड करके देन यू विल चेक द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर अंडर इंश्योरेंस लगाएंगे. तो द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर इंश्योरेंस इज रूल्ड आउट इन केस एस्केलेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब क्या है टैरिफ में एस्केलेशन जो है वो इनिशियली क्या था, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ टेकिंग प्रीमियम. एज आई टोल्ड यू 50% ऑफ द एस्केलेटेड अमाउंट वाज सपोज्ड टू बी चार्ज्ड. अब जब से ये फ्री हुआ है, नाउ एवरीबॉडी नोज, ऑल क्लाइंट्स एंड एवरीवन नोज इन द मार्केट दैट इट इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. सो नो वन इज टेकिंग लेस देन 50%, एंड वी आर आल्सो गिविंग लेफ्ट एंड राइट up to 50% escalation. So the chances of application of under insurance is almost zero. आज की डेट में प्रोजेक्ट पॉलिसी में तुम्हारा अंडर इंश्योरेंस कभी देखोगे ही नहीं तुम. यू विल नेवर सी. रीजन बीइंग कि एवरीबॉडी इज टेकिंग 50% अंडर इंश्योरेंस एस्केलेशन क्लॉज व्हिच इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 150 और मिल गया उसको फ्री में, तो नाउ द एस्केलेटेड वैल्यू इज 450. 450 का क्या होता है कि उसमें जो अंडर इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. अंडरस्टैंड?
Premium to be charged 50% of escalation amount. This is as per the tariff provision. It is to be ignored. Now, right now, there is no such condition. Maybe आने वाले टाइम में अगर कुछ कोई अच्छे दिन आ गए, then we will again start charging this. But right now, this is 0. Now, full escalation amount is available at any point of time. This I have already explained. Unlike your operational policies, इसमें पूरा आपको full मिल जाएगा during the project period. Now, additional custom duty cover. Now, ACD बोलते हैं, additional custom duty. ये add-on cover और है. This additional custom duty cover जो है, this is, ये क्या होता है? I'll just explain with the help of example. Say for example, project में when the project material was imported supplies were there. So at that time, say for example, custom duties were to the extent of 10%. 10% duty was applied, and the project sum insured was declared. Considering that, now at the time of loss, say for example, after 3 years, there is a loss, and some of the supplies are reordered, and at the time of repurchase, the duty component is increased to 15%. Now, as per policy terms and condition, this only the company is supposed to pay the original duty percentage which was taken into consideration. So only 10% would be paid, not 5%. This is additional custom duty. And if you wish to cover this, then ACD cover is required to be taken. Okay. Then in that situation, additional duty jo ho rahi hai, which is incurred, that will be paid under the policy. Then limit is also defined. Excess is also applied, but right now, again, no additional premium, no excess. The premium is only minimum net cat, STFI and EQ. Okay, thanks to free pricing, free market, competition. So customer is the king. It's okay. Customer is always king, and right now he is super king. But it continues. Now we have to decide up to what extent underwriters have to decide to what extent they want to go down. Okay. Now, this is very important. Cross liability cover. Till now, any question? Participants, अभी तक कुछ पूछना है? ठीक है. I hope everything is understood. Now, cross liability cover, this is important. This is an extension available under TP section of the policy, section 2. And this can be extended to cover subcontractors. When there are multiple subcontractors at the construction site, they are working, then this cross liability cover is taken. And by virtue of this cross liability cover, it says that liability extension is given to each contractor as if separate policy is issued to each party. Okay, that means if the property of one contractor is damaged by the other contractor while carrying out the contractual obligations, then such losses are payable under cross liability cover up to the selected limit. But this is known as cross liability. Okay, now what is the example? If the tower crane of one contractor collides with the crane of another subcontractor, then the loss of both contractors would be payable under this extension. Otherwise, pay nahi hoga na use. So, third party liability, in that situation, separately, they will not have to take the policy. Otherwise, each contractor will have to go for third party liability extension. By virtue of this single extension under the policy, each subcontractor is automatically covered. Okay. Similarly, if two dumpers belonging to different subcontractors, they collide with each other, the damage to each dumper would be payable under this policy.
So similarly, two dumpers, they collide, the loss of both dumpers will be paid under this extension. Now this extension will not apply. This is very important. Under cross liability, not everything is paid. These are the two things which are not covered. Loss or damage to project material is not covered, even if they are not recoverable due to excess, policy excess. Policy excess में अगर pay नहीं हो रहा है, suppose there is a small loss to the project material, which is a part of basic CR policy. तो वो पॉलिसी एक्सेस में आ रहा है, आपने 15 टाइम्स पॉलिसी एक्सेस लगा दिया है ना, लॉस छोटा है एंड पॉलिसी एक्सेस इज 50 lakhs एंड लॉस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 40 lakhs, so it is not payable, so it cannot be covered under cross liability cover. This is number one. Understand? Even if it is done by some contractor, so any damage to the project material is not a part of this cross liability cover. Number two, fatal or non-fatal injuries or illness of the employees of workmen, वो भी cover नहीं है. This will be covered only under basic policy, third party section. Cross liability में वो cover नहीं होगा. Even though they are not insured under workman compensation policy or employees liability insurance cover. Understand? If they are not the part of nor insured under WC policy or employees liability insurance cover, still fatal or non-fatal injuries to the employee and worker वो नहीं पे होगा under this cross liability cover. But these two things are excluded, rest everything is covered. Project material नहीं cover होगा, उनकी personal जो belongings है, उनकी tower crane है, contractors के जो equipments हैं, that will be paid. And that's all for this session. It is already 2.5 hours. Okay. And thankfully, we could finish well in time. Now, this is open for all. Any question, anything you would like to ask, I'll be happy to reply. In part 2, I'll just show that will be an advanced version, part 2. I'll be explaining this maintenance period cover. Okay, just I am showing. This is what I am going to tell. This is extended maintenance, limited maintenance. This is what is going extended maintenance, and case study is there, which are the example of extended maintenance. Extended maintenance is a bit difficult to understand. What are the examples? So there are a few examples I could find. Case study, loss under extended maintenance cover. This I'll explain to understand, make you clear. Then this is another case study, which I am going to explain. Then this is about, what is that? Temporary. क्या लिखा है? Heading क्या है? Gaurav, just read. So temporary contract work, put to use cover. Put to use cover. तो वो add-on cover जो extension है, I told you ना, extension can be given. So this is what add-on cover wording for temporary construction. Then design defect, I'll be explaining DE1, DE2 with examples. DE3, it is up to DE3. And in that ER policy, it is DE4 and DE5. DE5 is not given, but here in civil engineering contracts, it is up to DE3. So these are the practical examples. Then important warranties I am going to cover. Road construction. इसका जो warranties हैं, road construction section warranty. Then these are the types of your different categories of road, part of the roads. What is subbase, subcontract, and access roads to hydro power plants. So this is the open section warranty, which we call. Okay, यहाँ का heading क्या है? ये मुझे heading देख नहीं रहा है, ये आ जा रहा ऊपर मेरे में block कर रहा है. So open trench warranty, pipeline. Open trench warranty for piping. हाँ, उसके लिए ये open trench warranty है, which I am going to explain. Then what is horizontal directional drilling? I'll explain that. This is piling works. Then pile foundations. Then warranty for
क्या लिखा है ऊपर, हेडिंग पढ़ते जाओ। Warranty Sir, for file- building construction. Pile foundation. Then MR 110, this is regarding that precipitation and flood and inundation warranty जो हम लोग लगाते हैं. These are few excavation works which are going on. This is excavation, deep excavation warranty. Different MR wordings are there. Then roads and bridges, underwriting of tunnels, types of construction of tunnels. These are different types of tunnel boring machine, underwriting constructions. These are various types of hydropower plants. Pumped water storage, recent concept is there. Pumped hydropower storage guide, this kind of plants, how do they work? Okay, this kind of. Then ये तीस्ता ऊर्जा सिक्किम loss, I'll talk about that. Then floating solar power projects, these are coming in big numbers. Uska concept hai, these are all, what are these floating solar power plants, different categories, what are the underwriting considerations, what are to be taken into consideration, underwriting consideration. Then underwriting of jetty, ports and breakwater. This is breakwater. What are the underwriting considerations? They are to be explained, because in Swissary terms, we understand a lot of things. These are the breakwater. Then Munich Re wet risk endorsement, I'll be explaining in detail. Normal action and C and warranties, and that's all regarding part 2. So this would be the around 50-60 slides for part 2, which I will be doing in another 10-15 days within this month. By the end of this month, October, I'll be finishing this. And I hope. हाँ सर एक बस बेसिक सा क्वेश्चन था ये कि हम लोग ये जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 5% ज्यादा क्यों होता है, एंड सिर्फ 5% क्यों? हाँ, उसका रीजन ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मैनी टाइम्स क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने पॉलिसी लिया और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट में काम ही नहीं, छोड़ के भाग गया. उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ बन जाएगी. हमें एडिशनल, बिकॉज वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क, कितना हमने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है, पॉलिसी बनाया है, डेटा कलेक्ट किया है, उसका कैलकुलेशन किया है, सम इंश्योर्ड, एवरीथिंग वी हैव डन. So that is why, just to take care of this administrative cost, additional work which we have done, we collect that. उसके बाद तुम भाग जाओ, no problem, हमने अपना collect कर लिया, first installment ले लिया और additional 5%. Do you got the justification? Why? मतलब हाँ ठीक है, मतलब if it is a statutory thing कि 5% ही लेना है. हाँ 5% लेना है, अब उसका क्यों 5% लेना है, तो इसका कोई कुछ एडिशनल पैसा लेना है तो 5% ले लिया. हम जस्ट टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो हमने खर्चा किया फॉर इशुएंस, दैट पॉलिसी इशुएंस एंड दैट कलेक्शन डेटा, डिस्कशन विद द क्लाइंट. 4-5 मीटिंग हुई, दिल्ली में क्लाइंट बैठा था, आप लोग एरोप्लेन से गए, वहां होटल में रुके, बात हुआ. आज की डेट में प्रपोजल ऐसे ही थोड़ी फाइनल हो जाता है. लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन. ये सब करने के बाद आपने प्रोजेक्ट किया और उसके बाद उसने एक इंस्टॉलमेंट आपने लिया, उसके बाद 15 दिन बाद काम छोड़ के भाग गया उसका कॉन्ट्रैक्ट, या कुछ डिस्प्यूट हो गया, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनीज दे डिसाइडेड टू चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ठीक है सर, थैंक यू सर. यस Sir, as we understand in any project policy, anything which is being put to use is going outside the scope of cover of project policy. तो सर बेसिकली रोड प्रोजेक्ट्स में जैसे आपने कहा था कि रोड प्रोजेक्ट्स में मतलब वन साइड ऑफ द रोड विच इज नाउ गेटिंग ऑपरेशनल, वहाँ पे रोड गाड़ी शुरू कर दिया, तो इट इज बीइंग पुट टू यूज और वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कवर चला जा रहा है. तो
what we understand project policy में there is an option of client can enhance the sum insured, increase the sum insured, but जब उसका कुछ भी चीज out of the cover चला जा रहा है, whether the client has the option to decrease the sum insured also. टेंशन के समय सुनिए, अब ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैनी टाइम्स क्या होता है, उसका 60 किलोमीटर्स का रोड है, 40% इज कंप्लीटेड एंड इट इज हैंडेड ओवर। अब पॉलिसी एक्सटेंशन आता है, एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन यू आर सपोज टू रिड्यूस द सम इंश्योर्ड। आप पूरा 60 किलोमीटर्स के रोड का सम इंश्योर्ड का थोड़ी एक्सटेंशन दोगे, आप जो दोगे रिमेनिंग 20 किलोमीटर्स का रोड है उसी का एक्सटेंशन यू आर सपोज टू गिव। बट मैनी टाइम्स हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्लाइंट्स भी बेचारे क्या फंसे हुए हैं, एक्सटेंशन चाहिए, हम बोलते हैं नहीं एक्सटेंशन मिलेगा तो मैं पूरा 60 किलोमीटर का ही मिलेगा। Although we will not pay for 40 kilometers, it is already project is handed over, and our policy clearly says project which is completed and handed over, policy is not responding. Still, we try to charge premium, which is not correct. Right. Does it reply So, to sir, your query? Right, sir. Sir, one more query related to this only. So, sir, once it is going outside the scope of cover, now अंडर इंश्योरेंस जब देखा जाएगा, मान लीजिए कोई लॉस आता है तो अंडर इंश्योरेंस जब देखा जाएगा तो उसका अंडर इंश्योरेंस नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, एक्सटेंशन के समय कोई अंडर इंश्योरेंस अगर लगेगा तो वो रिमेनिंग सम इंश्योर्ड पे भी लगेगा, क्योंकि आपका वो पॉलिसी आपका बाहर हो गया। तो नाउ द प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड टू 20 किलोमीटर्स में, तो अंडर इंश्योरेंस भी लगेगा 20 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, नॉट 60। राइट। और बताइए सर, इफ इट इज नॉट हैंडेड ओवर देन? हाँ, इफ इट इज नॉट हैंडेड ओवर एंड नहीं हैंडेड ओवर अगर नहीं है एंड पुट इनटू यूज है, it is given for public road, principal has not taken over, but it is put into use, then again you are not supposed to charge premium on that. So handed over is not the alone requirements, sole requirement. What are the two requirements? Either it is put into use or handed over to the principal. Is that clear? Yes, sir. Yes, Mr. Melvin, any query from your side? Yes, dear. Hi, Mr. EP. Just a small thing on debris removal. You told, right, 10% of the claim amount. Hello. We the adjusted claim amount or the claim amount that the insured has raised initially. No, claim amount, assessed claim amount. We are talking. Assessed claim amount. Okay. Yeah, that's fine. Which has been assessed by the surveyor, not what is claimed by the insured. Okay, thank you. Claim amount is assessed. Fine. Thank you. Yes, Vikas. चेतन हेलो, बोलिए। हेलो, यस सर मेरा ओएसपी को लेके क्वेश्चन था एक। ओएसपी को सपोज किसी की 5 स्टोरी बिल्डिंग है, अब ओनर चाहता है कि इसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाए, तो इसमें सर जो 5 स्टोरी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है उसे ओएसपी में ले सकते हैं क्या? नहीं, मैंने ये आपको जवाब दिया, आपने शायद सुना नहीं। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जहां एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो सर उसे किसी तरह से कवर कर सकते हैं? उसको आप सेपरेट, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी सेपरेट फायर पॉलिसी दे देगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, और उसका प्रोजेक्ट सम इंश्योर्ड 2 स्टोरी का ही होगा केवल, जो ऊपर 2 स्टोरी बन रही होंगी? नहीं, अगर आपने फायर पॉलिसी ले लिया है तो फायर पॉलिसी विल बी गिवन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट नो लॉस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शैल बी पेड। ओके सर, ओके। तो आपके सामने द कॉन्ट्रैक्टर हैज गॉट 2 चॉइस, आइदर remove this sum insured and take fire policy subject to this warranty, fire policy में वारंटी लगेगी, no loss relating to construction activity shall be payable under fire policy। दूसरा चॉइस क्या है, उसको प्रोजेक्ट सम इंश्योर्ड में ही ऐड कर लीजिए आप। जी हाँ, that is another way। जी, लेकिन OSP cannot be given। This is what थैंक यू सर। OSP तब मिलता है, listen, OSP तब मिलता है, as I am repeating once again, which was the property which was there at the time of commencement of policy, property जो पहले से ही था। तो सर ये प्रॉपर्टी भी जैसे पहले से था, सपोज पहले से नहीं है ना ये बॉस, जब जिस समय 0 से स्टार्ट हुआ बिल्डिंग उस समय तो नहीं था ना। अच्छा, ओके। हाँ, और सराउंडिंग प्रॉपर्टी, ये सराउंडिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। अब टावर है, टावर में 10 बिल्डिंग, ऊपर 6 बिल्डिंग और बन रही है हमारा, तो this 10 floors cannot be considered as surrounding building. It is a part of that project.
It is not the surrounding property. ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ध्रुव हियर। Yes, Dhruv, please. अच्छा, चेतन सर का ही क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। हाँ। बिल्डिंग 10 माले की है ऑलरेडी, 5-10 साल 15 साल बाद वो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ। तो अगेन वी टेक द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन पूरे बिल्डिंग की एंड वी कैन स्टार्ट, करेक्ट? एंड उसमें ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी नहीं लेना है एंड फायर पॉलिसी भी नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरी ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सीआर में ले रहा हूँ। हाँ, अगर आप पूरा ले रहे हैं तो ठीक है, और नहीं ले रहे हैं तो फायर पॉलिसी ले लीजिए 10 माले तक का विद दैट वारंटी। विद दैट वारंटी। वो वारंटी के साथ फायर पॉलिसी लीजिए और ऊपर 7 माले का ही कंस्ट्रक्शन का पैसा दीजिए। दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। अच्छा, एंड अनदर थिंग, ये जो था कि वो पुट टू यूज वाली चीज में ये 10 माला नहीं गिना जाएगा? नहीं, ये पुट टू यूज टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन नहीं था ना। अच्छा, हाँ, ओके, पुट टू यूज वाला सिर्फ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के सुनो लिए। सुनो सुनो, अगर आप उसको एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आप उसको कॉन्शियसली डिक्लेयर कर रहे हो ना, बिकॉज दिस कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन ऑन द सेम बिल्डिंग। तो इसलिए आपके सामने 2 चॉइस है। एक तो ये है सीआर में ही कवर करिए। अब सीआर में अगर बीमा कंपनी नहीं मानती है, मैनी कंपनीज विल नॉट एग्री, बोलेंगे 10 साल पुराना कंस्ट्रक्शन को हम क्यों लें। उस केस में आप इसको ऊपर का नीचे का पोर्शन अलग करिए, लेकिन ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। फायर पॉलिसी ले लीजिए उसकी। अच्छा, तो ये 10 इयर्स पुरानी बिल्डिंग के लिए ये प्रॉब्लम रह सकता है। हाँ, ये या फिर प्रॉब्लम ओल्ड। रहेगा। एग्जैक्टली, नए बिल्डिंग में एक बार को, बिकॉज बीमा कंपनी विल नॉट एग्री फॉर दिस। अच्छा, फॉर अ ओल्ड बिल्डिंग, इतना पुराना बिल्डिंग, अगर ये तुम्हारा 6 महीने का ही गैप है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। ओके। यस, कैसिन। Yeah, Vishnu sir, I have 2 questions. One, ये जो cross liability is a part of the extension of the third party liability. Yes. अभी आपने जो दोनों एग्जांपल्स विष्णु सर दिए कि डंपर्स हैं, अभी 2 डंपर्स हैं या 2 क्रेन्स हैं। अब हमने अगर सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम पॉलिसी में दे रखे हैं, विच इज सपोज टू बी गिवन, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, तो उस केस में अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी का कोलिजन होता है और एक क्रेन 50-50 लाख की है, टावर क्रेन, तो क्या ये थर्ड पार्टी में कंसिडर होगा या थर्ड पार्टी में, बिकॉज इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी, दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी नहीं हुआ ना, कैसे हुआ? वो तुम सीपीएम की बात कर रहे हो, उसको सीपीएम में कवर किया हमने। सीपीएम में तो सर 50 लाख से ऊपर कवर ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कौन कहता 50 लाख से ऊपर कवर नहीं? सीपीएम आप 10 करोड़ का ले लीजिए, हु स्टॉप्स। अच्छा, अंडरराइटर्स दे गिव अ मैक्सिमम। नहीं, वो ऐसा, वो मिसकंसेप्शन है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, सीपीएम पॉलिसी के लिए कोई लिमिट थोड़ी है। सीपीएम में आप जो है प्रोजेक्ट का जो है, आप अगर प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा 1000 करोड़ का है, तो आराम से 100 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी होगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब, लेकिन दैट विल बी अ सेपरेट पॉलिसी फॉर सीपीएम क्या? नेचुरली अगर सीआर में एक्सटेंशन लेना है, तब उसका वैल्यू जो है 25 लाख तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ सीपीएम इक्विपमेंट is up to 25 lakhs, then separate policy is not required. CAR policy में ही CPM का extension दे देंगे। Okay. If the value is more than 25 lakh, 5% of total project value or 25 lakhs, whichever is lower, yes sir, तो फिर आप उसको separate policy देंगे। तो separate policy देंगे, but उस condition में separate policy भी देंगे, तो it will be considered in cross liability cover कि हमको सीपीएम में लेना पड़ेगा सर? सीपीएम में सीपीएम तो इसलिए लेना है बॉस कि जहां पे एक्सीडेंटल कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा व्हीकल जो है टॉपल हो गया, करेक्ट, या फिर उसका तुम्हारा जो है लोड उठाते समय उसका बूम टूट गया, तो वो सब चीजें जो ऑल दोस क्लेम्स विल कम अंडर द परव्यू ऑफ सीपीएम पॉलिसी। यहां पे हम बोल रहे हैं 2 कॉन्ट्रैक्टर का आपस में, सब कॉन्ट्रैक्टर, देयर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स दे कोलाइड, तो वो क्या होगा? वो सीपीएम में नहीं हुआ ना, वो तो आपस में थर्ड पार्टी लायबिलिटी हुई, वो आपस में उनका टीपीएल क्लेम हो गया, तो दोस काइंड ऑफ क्लेम्स विल कम अंडर सीपीएम, वो क्रॉस लायबिलिटी एक्सटेंशन व्हिच इज गिवन अंडर द पॉलिसी। ओके नहीं, बिकॉज़ लायबिलिटी क्लेम हुआ ना, वो लायबिलिटी क्लेम हुआ, सीपीएम क्लेम नहीं हुआ।
ओके ओके सीपीएम क्लेम कब होगा? सीपीएम कंस्ट्रक्शन साइट पे उसी कॉन्ट्रैक्टर की दो गाड़ियां लड़ गए, ये सीपीएम क्लेम है कि यहाँ थर्ड पार्टी कुछ नहीं है। वहां दो सब कॉन्ट्रैक्टर आपस में व्हीकल लग रही तो वहां पे थर्ड पार्टी क्लेम हो गया। ओके 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 got it sir. Hi sir, Yes, sir, there's a second question is escalation का you were talking about escalation that अगर हमने escalation I was always of an assumption कि escalation is that after 2 years if the project of the raw material or the cost of the raw material increases then we don't have to extend the policy and escalation के अंदर वो part होगा। but आपने एग्जांपल देते वक्त बोला कि अगर 7 दिन बाद भी अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वैल्यू हमने ओमिशन टू इंश्योर या अंडर इंश्योरेंस वाला जो क्लॉज है, अगर मैंने 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 150 करोड़ का ही लिया और 150 करोड़ का मेरा एक्सटेंशन आया, अज्यूमिंग आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, और मेरा एस्केलेशन अगर मैंने क्लॉज ले लिया तो डू यू थिंक अंडर इंश्योरेंस विल नॉट बी कवर्ड एंड आई विल बी स्टिल गिवन द एंटायर क्लेम एंड आई ओनली पे द प्रीमियम फॉर 150 करोड़? इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? लिसन, अगर मिड टर्म इंक्रीज इन वैल्यू है, मिड टर्म इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड है, हाँ, देयर इज सम एडिशन इन द प्रोजेक्ट, यस, देयर आर टू थिंग्स। वन इज प्रोजेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है? Correct. जो प्रोजेक्ट आपका 3000 करोड़ में होना था, नाउ इट विल बी कंप्लीटेड इन आफ्टर 6 months you come to know that now my estimated completed value will be 3500. करेक्ट In that case you are supposed to increase the policy sum insured. करेक्ट You can't take it granted कि मेरा तो escalation है तो just leave it. If हाँ. it comes to your knowledge, then you are supposed to increase the policy sum insured. है ना? If it is And at the time of claim, अगर सर्वेयर में वैल्यू निकाल के आपने तो अपने हिसाब से as per your calculation it is fine 3500. Okay, but the surveyor when he calculated he found no, your estimated completed value is 3200. That time you will be rescued by escalation clause which you have taken in the policy. okay okay फिर अंडर इंश्योरेंस आपको बचा लेगा in that situation. ये जो escalation clause will save you by for against saving of against application of under insurance. technically this is not omission to insure under insurance. Omission to insure is separately. उससे कोई लेना देना नहीं. This is Under insurance is nothing to do with omission to insure. okay. वो तो estimated total completed of value. इसमें omission to insure project value में नहीं होता. Project insurance में क्या omission to insure होगा? Operational policy में होता है कि मैं assets अपना फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, 10 आइटम में छूट गया, एक गोडाउन का इंश्योरेंस लेना ही भूल गया, because my godowns are scattered all over India. I forgot to include one. That kind of situation will come under omission to insure. In project insurance, there is nothing like omission to insure because everything is there. Your project cost you are aware, na? Okay. Perfect. So project cost के हिसाब से लगा है. Where is the under वो omission to insure? Right. Okay. चलो thank यश बताओ भाई. What is your query? अच्छा कैसिन, हाँ कैसिन. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि एट द टाइम ऑफ क्लेम रिएक्टेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे प्रोजेक्ट की? क्या चीज? एट द टाइम ऑफ क्लेम हाउ वी विल अराइव एस्टिमेट how वो we उसके will arrive at हाँ the तो वो total project नहीं उसका cost? तो हाँ मैं बता रहा हूँ. उसके लिए तो सर्वेयर उसका देखेगा ना, पेपर्स देखेगा, वो देखेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, फिर कितना एस्केलेशन हो चुका है अभी तक उन वैल्यूज में, प्राइस एस्केलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा लेबर कॉस्ट कुछ इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है. दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और बेस्ड ऑन दैट वो एस्टिमेटेड कंप्लीटेड कॉस्ट निकालेगा और प्लस उसमें फिर देखेगा अंडर इंश्योरेंस लग रहा है कि नहीं. अंडर इंश्योरेंस आजकल इसलिए नहीं लगता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, रीजन बीइंग कि बिकॉज ऑफ एस्केलेशन 50% हर आदमी लेके बैठा हुआ है, तो फॉरगेट अबाउट अंडर इंश्योरेंस. ये अब मतलब एक थ्योरेटिकल बात हो गया, प्रैक्टिकल बात नहीं है. It is in books only. Okay. Application of under insurance project policy is a bookish thing. Okay. Okay. Yes, Dhruv. क्रॉस लाइबिलिटी में जब भी आपने टावर क्रेन वगैरह वाली चीज बोली, दो अलग कॉन्ट्रैक्टर की है एंड वो डैमेज कर रही है एक दूसरे को, सो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी पार्ट एंड वो सीपीएम के साथ अपन सीआर पॉलिसी के साथ अपन कवर करेंगे. एंड अगर खुद ही का एक्सीडेंटल है तो वो
सीपीएम पॉलिसी में वो अलग से खुद के पॉलिसी में क्लेम कर रहा है, करेक्ट? यस डियर। ओके, अभी इसमें मेरे को एक और चीज पूछना था, ये क्रॉस लायबिलिटी इज टुवर्ड्स द सीपीएम मशीनरी या फिर एक जन अपना कुछ काम कर रहा है, लेटस से लिफ्ट बना रहा है, लिफ्ट बनाते बनाते कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोर स्ट्रक्चर में लिफ्ट टूट गई एंड कोर स्ट्रक्चर रिपीट करना पड़ा, लिफ्ट की एजेंसी अलग है, कंस्ट्रक्शन वाली एजेंसी अलग है, तो इसमें अप्लाई होगा कि नहीं अब होगा? सुनो, हाँ, तो मैंने एक चीज क्या बोला कि क्रॉस लायबिलिटी कवर इट एक्सक्लूड्स एनी डैमेज टू प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। अगर वो प्रोजेक्ट का पार्ट है, जैसे लिफ्ट का तुमने बताया, लिफ्ट केज जो है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, तो फिर वो क्रॉस लायबिलिटी नहीं आएगा ना, वो तो फिर प्रोजेक्ट पॉलिसी, वो तो सेक्शन 1 का पार्ट हो गया, एंड योर सीआर पॉलिसी विल रेस्पॉन्ड टू दैट। ओके ओके, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर इज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी, सब कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइडर नहीं है, तो टीपीएल भी नहीं हुआ, थर्ड पार्टी कहां से हुआ? हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, दे आर नोटेड, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द फेस ऑफ द पॉलिसी। करेक्ट। ओके, तो वो एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हुआ। ओके, एक और सिनेरियो था, सिर्फ जब भी पीएमसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी अलग से है, एक बिल्डर है, पीएमसी है, एंड देन देयर इज वन सब कॉन्ट्रैक्टर एंड फिर मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी? नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, इफ इट इज रिकॉर्डेड ऑन द फेस ऑफ द पॉलिसी एज अ कंसल्टिंग कंपनी, ओके, तो वो that अलग can से be मेंशन recorded, करना। that has to be declared as a part of the project, उसको भी आप उसमें ऐड करवाइए ना पॉलिसी में। अच्छा, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम देते हैं, ऐसे ही वो पीएमसी कंपनी जो है उसको भी आप ऐड कराइए। ओके हाँ, दे आर आल्सो सपोज टू बी शोन ऑन द फेस ऑफ द पॉलिसी। ओके, अच्छा, नोटेड। यस 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 यस, तुम्हारा बोलो, हाथ तुम्हारा उठा हुआ है बहुत देर से। अरे आवाज नहीं आ रहा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर माय डियर। नहीं, थोड़ा साफ बोलो। हाँ बोलो, टूटा टूटा फूटा आवाज आ रहा है, या तो लिख दो ना क्वेरी। हाँ सर, क्वेरी ये था सर, बीयूसीसी के रिगार्डिंग था क्वेरी। तो ये बीयूसीसी फिर ये लोग मतलब यूजुअली लोग फायर में ऐसा क्यों लेते हैं, और वो तो सीआर में ही होना चाहिए ना, फिर बिल्डिंग अंडर सीआर कोर्स ऑफ में होना कंट्रोल। चाहिए, हाँ, सीआर का प्रीमियम रेट ज्यादा है, पॉलिसी एक्सेस ज्यादा है, बीयूसीसी एकदम सस्ते में मिल जाता है ना, दैट इज वाई पीपल प्रेफर बीयूसीसी। लेकिन बीयूसीसी के अपने एक नुकसान है, बीयूसीसी इज ओनली टिल द टाइम बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बार सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, बीयूसीसी पॉलिसी एक्सपायर हो गई, इसलिए सीआर पॉलिसी इज अप टू द एंड, जब तक वो प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हो रहा है, टिल देन इट कंटिन्यूज। वेयर एज बीयूसी पॉलिसी में ये इंटरनल डेकोरेशन वर्क, ये सब काम नहीं होता। एक बार सिविल वर्क इज ओवर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग इज ओवर, प्लम्बिंग वर्क इज डन, उसके बाद जो इंटीरियर डेकोरेशन वर्क होता है, ऑफिस में कितना काम होता है, फॉल सीलिंग लगेगा, सेंट्रलाइज एसी लगेगा, लाइटिंग लगेगा, उसके पार्टीशंस बनाए जाएंगे, टेबल चेयर लगेगा, ये सारा काम बीयूसीसी डज नॉट कवर दैट, वेयर एज सीआर पॉलिसी विल कंटिन्यू till end, till the entire building is finished and it is handed over to the principal. So CR policy is much better, it has got a wider cover, wider scope, whereas BUCC में बहुत झगड़े होते हैं, claims are not paid ultimately once the civil construction is done, claims are disputed. और मतलब वही सर, बेसिक क्वेश्चन तो वही था कि फिर फायर तो ऑपरेशनल पॉलिसी है, तो बीयूसीसी में हम कंस्ट्रक्शन फेज भी कवर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं, वो केवल कंस्ट्रक्शन करना है, BUCC is designed for that, although it is a fire। लेकिन एक चीज और है, BUCC का कवर, it is a fire policy, it is limited to 12 perils, फायर, एक्सप्लोजन, ये, लेकिन कोलैप्स हो गया, बीयूसीसी कवर नहीं करेगा। तुम्हारा और कोई एक्सीडेंटल डैमेज है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बीयूसीसी कवर नहीं होगा। बीयूसीसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 12 perils जो फायर है, इट इज अ लिमिटेड कवर, इट इज नॉट अ ऑल रिस्क पॉलिसी, इट इज अ नेम peril पॉलिसी। ओके सर, और एक और था कि जब अपन अभी जब ये पढ़ रहे थे अपन टैरिफ वर्डिंग, तो उसमें एक जगह आया था प्राइम कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, अगर उनका वैल्यू बढ़ता है घटता है तो वो फिर अपन इंक्लूड नहीं करते इसमें,
लेकिन अभी जब एस्केलेशन लगेगा क्लेम के टाइम पे, अगर और उन मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा एस्केलेशन, तो वो इंक्लूड हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा नहीं वो। नहीं, प्राइम कॉस्ट जो हमने बोला वो रिफंड ऑफ प्रीमियम के लिए बोला। जी। रिफंड ऑफ प्रीमियम में प्राइम कॉस्ट में जो वेरिएशन होगा उसका कोई रिफंड नहीं होता। रिफंड होता है रिफंड ऑफ प्रीमियम का जो इस तरह की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वेजेस है, फ्रेट है, चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, इसमें टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी में कोई रिवीजन होता है, उस तरह के जो चार्जेस हैं उसके लिए तुम्हारा ये रिफंड ऑफ प्रीमियम का क्लॉज है। एडजस्टमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड वाली जो बात हमने कही थी, प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मटेरियल इज नॉट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, ये मैंने बोला था। अंडरस्टूड सर।